Hello everyone. Am I audible? Yes, Mishti. Yes, ma'am. Okay. So, very good afternoon to everyone, and thank you for joining, and thank you for giving your Sunday time with us. So, we have organized an articleship guidance session, जिसमें हमने बहुत मतलब जितने भी डोमेन्स पॉसिबल है वहाँ से आर्टिकल्स को इनवाइट किया है और वो यहाँ पे डोमेन के रिगार्डिंग सारी प्रैक्टिकल जितनी भी नॉलेज है वो प्रैक्टिकल नॉलेज आपके साथ शेयर करेंगे और एक और आपको उस डोमेन की फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज एंड द चैलेंजेस एंड एवरीथिंग एंड देयर ओन एक्सपीरियंस वो सब ये शेयर करेंगे आप लोगों के साथ. सो दिस विल हेल्प यू ऑल टू टेक अ डिसीजन रिगार्डिंग विच डोमेन टू गो बिकॉज बिफोर joining this meet maybe many of you have decided the domain of the articleship in which you all want to go, but some people maybe who are confused. Like when I was searching my articleship, even I was confused, like whether to go for big six or to go for a mid-sized firm, whether to go for valuations or to go for statutory audit. So then after talking to many people, I decided and I went for statutory audit. So we have conducted a session last year also, which has helped many people. The session was in the same pattern, like we have called articles from Big Four, Big Six, and other mid-sized firms also to share their knowledge and experience regarding the domain. So already we are running late. So without wasting our much time, we would be starting with the session. So Varun, do you have anything to share upon? No, we can start with IDD. Okay, sure. So the first domain that we would be covering is indirect taxes. And for indirect tax, we have Neha Thakur. She is a chartered accountant and has 1.5 years of experience in IDT in Briska and Associates, Bhopal. So I would request Neha. Hi, thank you, Hi. Srishti. So, hello guys. I'm Neha Thakur. I'm actually CA Neha Thakur. I just cleared my CA final in the May attempt itself. So, I stand before you to share my experience and insight gained during the articleship in the domain indirect taxation at the very middle-sized firm in Bhopal. सो लाइक नॉर्मली इनडायरेक्ट टैक्सेशन का हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा एक्सपोजर लोगों को मिलता नहीं है नॉर्मली इन मिडिल साइज फर्म और ऐसा बोला जाता है बट इट्स नॉट नथिंग क्योंकि वी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ इमेंस नॉलेज इन दी वेरी न्यू लॉ विच इज़ जीएसटी सो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी में हम लोगों को नॉलेज वगैरह मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस मतलब अभी अभी से हमको होना बहुत ज़रूरी होता है. So that's why I did my articleship in the indirect taxation. I had very much interest in that. So in future also, I want to learn more in indirect taxation. During my articleship in the field of indirect taxation, I had the opportunity to work with various GST related tasks and projects. So here is a list of some GST work that I involved in majorly. First is GST compliance. Like I assist in preparing and filing GST returns for clients, ensuring timely compliance with the GST laws and regulations. It is very important to have a good data prepared with us for the GST returns. So returns जो होती है ना because GST returns जो है वो फर्स्ट स्टेप होती है डिपार्टमेंट को हमारी चीज़ें देने के लिए हम जो बिजनेस कर रहे हैं जो भी इंफॉर्मेशन तो अगर हम जीएसटी रिटर्न्स में जो डेटा देंगे अगर हम उसको प्रॉपरली डिपार्टमेंट तक जाएगा टैक्स अथॉरिटीज के पास जाएगा देन जो मतलब आधी प्रॉब्लम्स तो हमारी तभी ठीक हो जाएंगी. देन मेजर पार्ट होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट. बेसिकली क्रेडिट जो आपने अभी अपने इंटरमीडिएट में भी पढ़ा होगा कि आईटीसी जो हमको मिलता है लाइक व्हेन वी परचेज समथिंग हम किसी को टैक्स पे करते हैं जीएसटी पे करते हैं एंड देन वी गेट द इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉम दैट. सो आई हेल्प टू रिकंसाइल द आईटीसी क्लेम बाय क्लाइंट with the supplier's return. Sorry. So I help in my articleship to reconcile the ITC claimed by client with the supplier's return, ensuring accurate reporting होता है कि reporting जो है वो properly हो
और यूटिलाइजेशन जो है वो अवेलेबल, जितना भी क्रेडिट हमारे पास अवेलेबल है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाए. सो दिस इज वेरी मेजर, मतलब दिस इज वेरी 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 गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस. एक्चुअली क्या होता है ना, क्लाइंट्स को अपना ही क्रेडिट समझ नहीं आ पाता है कि उनको किस गुड्स और सर्विस का क्रेडिट चाहिए, किस गुड्स और सर्विस का क्रेडिट नहीं लेना है. तो यहाँ पे हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टू हेल्प देम इन दैट. Now GST audits. Now audits like the signature of the chartered accountants is not anymore like available for us, but its self reconciliation is in the law. So self reconciliation करते time पे clients don't know how to reconcile it. So I assisted in conducting GST audits for client. रिव्यू करना, उनके रिकॉर्ड्स को रिव्यू करना, ट्रांजेक्शंस को, ताकि टू इंश्योर करें कि कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं जीएसटी लॉ के साथ, और जो भी पोटेंशियल डिस्क्रिपेंसीज हैं, because there is like penalties we can say, the department is penalizing the clients for the discrepancies they are getting. They usually find the discrepancies and then they are penalizing. So we as their chartered accountant, as their tax representative, are like, we have this duty to aware them for that potential discrepancies, so that उनको उन आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो. देन जीएसटी एडवाइजरी. जीएसटी एडवाइजरी में ऐसा होता है कि मैंने, मतलब इन माय आर्टिकलशिप आई प्रोवाइडेड गाइडेंस एंड असिस्टेंट टू क्लाइंट रिगार्डिंग जीएसटी इम्प्लीकेशंस टू बिजनेस ऑपरेशन. लाइक उनकी जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं उसमें उनको क्या गाइडेंस मिल सकता है जीएसटी में, वो हम उनको यूजुअली बताते हैं. जैसे कि उनकी जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या है ना, जीएसटी इज वेरी न्यू, so they are not at all that much knowledgeable कि क्या कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है, क्या मतलब रेगुलेशंस हो सकती हैं, तो उस बारे में हम उनको एडवाइजरी देते हैं. सो दिस इज द ऑल्सो वेरी गुड एक्सपोजर फॉर अस. नेक्स्ट इज जीएसटी रजिस्ट्रेशन. यूजुअली द फर्स्ट स्टेप इज रजिस्ट्रेशन. तो रजिस्ट्रेशन करने में भी वी यूजुअली गाइड द क्लाइंट्स, और वी do their registration, the supporting documents, how to tackle with the departments. Like department usually, if they don't know that the client is doing their registration by themselves, they usually, there is the possibility of some like bravery also. They usually take it from client as they are not knowledgeable for that. So we as a chartered accountant help them in online application submission, fill follow tax, or then take the follow up from the tax authorities in with as a tax representative of a client. Then GST refund. Refund is like taking money from tax department. So it is very very difficult to take the money from the government. So in my articleship, I supported clients in the process of GST registration, including documentation preparation, like how to give the replies to the department, as they are like, they usually लाइक दे, इट्स लाइक कि पैसा लेना, और ये बहुत मुश्किल हो जाता है डिपार्टमेंट से पैसा लेना. आईटी गवर्नमेंट से पैसा लेना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस. So they usually put so many complications to the client, so that it would not be possible for them to take money. But we as a tax consultant, we as a tax advisory, हम उनको गाइड करते हैं how to take money from the department in a very legal way. Yes. And then we have GST input restriction. There is some restriction in GST, like in which expenditure we can take ITC and in which expenditure we can't. So we need to guide the client for that also. Now I conducted GST training sessions also, in which I trained the my juniors and all the new articleship training like you, to how to uh, how to get your articleship in the GST. So it is also the very good एक्सपोजर फॉर अस, क्योंकि अभी तक लोगों को नॉलेज जीएसटी का बहुत कम है. इनडायरेक्ट टैक्सेशन, वैट इज वेरी नॉर्मल कि वैट के बारे में आपको नॉलेज फिर भी मिल जाएगा. लाइक आर एल्डर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत सारे हैं जिनको, बिकॉज इट नीड्स अपडेशन, जीएसटी इज गेटिंग अपडेटेड डे बाय डे. क्या होता है कि इट्स वेरी न्यू लॉ. सो जब हमें खुद नहीं पता ना कि उसमें कहाँ पे फ्लॉज हैं, तो जब जैसे जैसे लोगों को, जैसे जैसे हमारे लॉ मेकर्स हैं उनको पता चलते हैं फ्लॉज, दे यूजुअली गेट इट अपडेटेड. सो ऐसे हमारा जीएसटी जो है अपडेट होता रहता है. तो सो वी एज अ यंग एक्सपीरियंस, हमको एक्सपेक्टेड रहता है कि हम
हमेशा अपडेटेड रहे एंड डू आवर रिसर्च बाय डे and then like we need to kept ourselves actively updated for the latest developments जो है जीएसटी के लॉज में रेगुलेशंस में so that हम भी अपने जो क्लाइंट्स हैं वी कैन गिव द टाइमली एडवाइस टू देम आल्सो सो दैट वाज माय articleship experience actually now let's discuss the future opportunities in IDT like देखो IDT domain में there are so many वी कैन से कि जीएसटी इज वेरी न्यू लॉ सो ऐसा हो गया है कि अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी ऐसी लाइक ऑटोमेशन हो गया है लाइक टैक्स ऑटोमेशन हो गया ई इनवॉइसिंग वी नो सो देयर इज फ्यूचर अपॉर्चुनिटी इन दैट ऑल्सो लाइक हमको ऐसा लगता है कि देयर इज रिस्क फॉर दैट फॉर अस कि ई इनवॉइसिंग हो गया है तो उसके बाद हमारे लिए लाइक देयर इज नो अपॉर्चुनिटी ऑफ फाइलिंग जीएसटी रिटर्न क्योंकि अब तो ई इनवॉइसिंग हो गया बट it's very complicated actually e-invoicing is actually very complicated if client want themselves to do e-invoicing by themselves it is not at all possible for them so we as a like young aspirant हम लोग टेक्नो फ्रेंडली तो है ही तो हमको उस डिजिटलाइजेशन जो हमारी प्रोसेस हो रही है उसमें ऑल्सो वी हैव सो मच अपॉर्चुनिटीज जैसे डिजिटलाइजेशन हो रहा है एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हो रहा है तो उसमें हैज ओपन सो मेनी डोर्स फॉर अस as so that because when we stay updated अगर हम लेटेस्ट डेवलपमेंट से अपडेटेड रहेंगे तो हम अपने करियर को कैपिटलाइज कर सकते हैं प्रॉपर्ली और आईडीटी डोमेन में अपडेटेड रह सकते हैं सो इज देयर एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क फॉर दैट nothing You can ask any question like what was your work-life balance in that domain and whether it helped you in your practical studies or not. You can feel free to ask any question. sorry I'm not getting you Varun actually No, I was requesting the audience to ask any question. okay sure nothing okay now how to prepare interview questions or like the topics questions or in which type of interview questions you want see if you know the law and if you are doing some practical like gst is not that much complicated as income tax to be very honest income tax is very like we can say it's very old or it's very much it's getting too much updated day by day so we but gst जो है ना उसमें it is less complicated so if we know all the laws if we know some technical some clerical things like how to reconcile the turnover with how to reconcile our audited financial statement with the gst returns then we'll definitely like it will definitely answer all the questions also or if you are doing if you are like searching for practical aspects in practical questions and तो फिर आप लोगों को mm, like I'm suggesting you guys just do some like 6 month or 1 year training or in GST in IDT field also like normally ऐसा होता है कि हम income tax field में ज़्यादा focus रहते हैं but if we are doing IDT field में then it's like because it's very new so आप लोगों को भी experience अच्छा रहेगा उसमें now वैसे मैं बता दूँ अपना फिर उसके just give me a Now, lastly, let's brief touch upon the comparison between big four accounting firms and middle size firm. Now, I did my articleship in very middle size firm. Lekin while the like big four firms are also good, they have their own advantages also. Like they offer you prestigious clients and good infrastructure, you can say, and good clients you have और उसके बाद आपका ग्लोबल रीच भी होता है आपका हर जगह पे आप लोगों का लेकिन नॉर्मल मिड साइज फर्म डोंट हैव दैट मच ऑफ exposure or that much of good infrastructure but yes there is some good thing also in the mid-sized firm like we have the personal like we can say that we have very close relationship with our partner मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे जो प्रिंसिपल है ना हम लोग उनके साथ जो भी डाउट होता है ना वी आर फ्री टू वी आर वेरी मच फ्री टू आस्क एनीथिंग लाइक
very silly questions also we are very free to ask. But normally I like my friends are also, there are so many friends of me we are which are who are doing their articleship in the big four, but they are like कि they need to ask their like their questions to their senior, और I don't know, मतलब मुझे इतना ज़्यादा knowledge नहीं है बिग फोर का, बट यस आप ये जो होता है ना कि आपको अगर हर नॉलेज छोटी छोटी नॉलेजेस भी हर चीज की चाहिए होती है, तो मिड साइज फॉर्म्स आर ऑल्सो गुड. बट यस इफ यू वांट सम ग्लोबल रीच और सम अपना मतलब लाइक बड़ा बड़ा अच्छे 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 क्लाइंट्स और सम कॉम्प्लिकेटेड वर्क्स वी कैन से, you are very much like it's very good for you to go for big four firm. Or the choice between big four and a mid size ultimately depends on individual like preference, your career goals, whether you want to pursue for job or want pursue for practice मतलब like practice, तो उस पे भी हमारा बहुत डिपेंड करता है. देन मैं मतलब मेरा तो मिड साइज में फर्म था, हैज बीन हाईली रिवॉर्डिंग, मतलब लाइक आई डिड माय आर्टिकलशिप इन वेरी मिड साइज फर्म. Sorry, I'm repeating it's again and again, but it's very good for me. It was so, thank you for your attention. और अब मैं बोलूँगी I wish you all best for your future. और thank you so much. Yeah, there is a question that should they join a firm which particularly deals in IDT or a firm which gets exposure to all the domains? नहीं, I would like, I think you should join the firm which will get the all the fields including GST. It's not about only IDT, like 3 साल तक तुम IDT का ही पढ़ते रहो. No, 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 no. IDT ही करते रहो. You should have experience in all the other fields also. And as you were doing articleship in IDT domain, so whether it helped you in means CA final studies or not, and how Yes. did it help? Yes, it helped me in CA final studies. Actually, like GST refund, I can say. GST Yeah. refund is very practical topic, and it's very like it's very important topic of GST IDT in CA final studies. So it helped me a lot. And GST audits, like GST audits, GST returns. There are so many good topics in GST advisory also. So it helped us in our studies also. And it is the actually GST is the articleship in GST is very much practical of the syllabus of the GST. Totally practical experience of syllabus in GST. Yes. Is there anything? What kind of knowledge in GST do they expect from inter students in Big Four? The very normal knowledge, I think. So the knowledge which you like learned in your inter syllabus, it's like कि देखो हम लोगों को जब हम इंटर से निकल के आते हैं तो हम लोग को प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं समझ आता है कि हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं जीएसटी रिटर्न्स नाम की कोई चीज होती है, जीएसटी आर 1 3 भी नाम की कोई चीज होती है. वी डोंट नो हाउ टू what is in it and how to file it, we don't know, and they are not expecting from us as a CA inter student to like to have that much of knowledge. So it's like bookish knowledge they are expecting only from us. As a CA inter student only, as a CA final, they are expecting all the whole knowledge, all the practical knowledge also. Is there anything you want to ask? ठीक है. Okay, so thank you so much, Neha, for sharing your precious time and your words with us. And I hope it will help a lot of participants here. And even the audience, you can feel free to connect with Neha on LinkedIn. And if you are having any doubts, you could ask her there also. Yes, So sure. thank you so much. Thank you, Srishti. Thank you, Varun. So before we start with our next domain, I would like, if it's possible for you all to please turn on your camera so that we could see all your faces, and the speaker would also feel lively and interactive if your cameras are on. If it's possible, please turn on. Okay. So now moving forward to our next domain, which is mergers and acquisition taxation. So for M&A tax, we are having Rajat Rati. He has work experience as an article in Acumen for 1 year and also around 2 years in ENY, and he's currently in ENY.
for M&A tax and corporate restructuring. He is also having a AIR1 in CA Foundation in his attempt, and also was associated with Pune Vikasa as the treasurer. So welcome Rajat, and I would request you to please take over. Thank you so much, Srishti and Varun. So, at the very outset, I would like to congratulate and thank Varun and Srishti for organizing this webinar and also inviting me to become a speaker member on the panel. So before I begin with what amended taxation and the articleship experience was all about, I would like to introduce myself as Srishti has given a fair introduction, but I'll just say that my name is Rajat Rathi. I am pursuing my CA finals. I have my attempt due in November 2023, and I have been pursuing my articleship for the first year in Acumen M&A Advisors, that was in financial due diligence and valuations. And thereafter, I switched into EY. And right now, I'm doing my articleship in amended taxation. So we have been hearing what M&A is all about. All this thing seems fancy to all of us. The merger acquisition, investment banking, private equity, these are the words which have been booming nowadays. The startup culture, basically. So what exactly is M&A taxation? So, over a few period of time, with the ever-evolving regulatory landscape that has been coupled with the cross-border mergers, cross-border transactions, and at the same time, the unforeseen tax implications on any of the different type of acquisition or merger, the new leading organizations and you can say high net worth individuals, they have become a bit tailored and conservative to find out some experienced people, experienced organization in this field, so as to make the maximum advantage, take the maximum advantage of a particular transaction, be it from any angle, be it the legal angle, be it the taxation angle that includes direct tax as well as indirect tax, and any other industry specific issue. सो देयर इज अ स्टीरियोटाइप दैट मर्जर एंड एक्विजिशन टैक्स क्या होगा, तो एक कंपनी दूसरे कंपनी को अक्वायर कर देगी एंड उस पे जो टैक्स आ जाएगा, दैट इज द ओनली थिंग व्हिच वी डू. So no, not really. Even I was very much confused that what exactly this field includes. So I have made a list of the work experience which I have got in the last 1.5 years in my M&A department. I didn't want to miss out on anything, so I have just written it. So the first and the foremost assignment I got was tax due diligence. So due diligence is nothing but a initial process before any company wishes to acquire any another company. So on the audited financial statements of the company, we generally do a health check. So the due diligence involves three different aspects. That is the financial due diligence that comprises of, I guess, around 80% of the total due diligence. Tax due diligence, that is 15%, and legal due diligence, that is 5%. Tax, maybe we have direct tax and indirect taxation. So direct taxation due diligence is from buy side as well as sell side, where we highlight the potential risk that could arise or that might have been there in the financials of the company, which were not caught in the audited financial statements, or wherein scrutiny or assessment has not been done. So this is the base thing which actually helps us to understand how well versed we are with the sections of the income tax. And this like it starts right from section 2, that is the definitions, to the last section of the income tax act, that is 298 something, I don't remember the last section. So you need an overall comprehensive knowledge about all the sections of the income tax act for the purpose of due diligence. The second most important part is the transaction advisory or consultancy on domestic, inbound, outbound mergers and acquisition. Inbound and outbound mergers are basically the cross-border mergers which happen. And there are two different regulations of two different countries. The DTAA comes into picture, the taxation laws of that particular country, taxation law of our own country, BEPS, everything. So this is where our role comes, that whether this is a feasible option or what are the other options available with us in order to go ahead with the merger, and etc. etc. So advisory is all in all that includes many different aspects, be it repatriation of funds, be it tax modeling, tax structuring, etc. Demerger is also one of the very important, I can say, subdomain or subfield in which I have worked. More than mergers and acquisition, we have been seeing demergers which have been happening all around the world. We can see for Reliance also when they were demerging. If you want to see a few examples of demerger, you can go on NSE or BSE website and search NSE plus scheme of arrangement. You would understand, just for the purpose of listed companies, there are so many mergers and demergers that have been happening every week. And talking about private companies, we don't even know that there are so many mergers and acquisitions that are happening on a daily basis. So it's a very, you can say, a booming field for us,
to get into. Fourth is drafting and review of share purchase agreement, share subscription agreement, and many different legal contracts. What are the possible tax, you can say, risks or tax benefits we can attain from any particular contract, intangible asset contract, employment contract, anything. This is all. This is also the place where we play an important role. Trust taxation. I doubt if in the intermediate they have not touched upon trust taxation. It's directly in finals. But trust taxation is one of the most complex fields today in Income Tax Act, and this is also where we play a very vital role. A few examples to give was while I was doing one of the assignment in trust taxation, it included converting a Section 8 company into a private limited company, then into an LLP. That included right from corpus donations which the company was receiving to the infrastructure investment which it was building, etc., etc. All in all, that one assignment which went out for really long gave me, you can say, an altogether different aspect, which I don't think so that anyone on the R floor in any other department might have done, might have worked into. There are some boutique fields which are into trust taxation solely, so large and so big the domain for trust taxation is. Then you have succession planning. The parents, the high net worth individuals, they are now trying to, bifurcate their wealth or give their wealth to their children, and how to distribute it between two or three of them in a most tax effective manner. This is where we come into picture. That includes alternate investment funds, also AI structures, also that are the SEBI regulations that come into picture. We have InvIT regulations, infrastructure investment trust. I doubt if I didn't have any idea before joining my articleship what infrastructure investment trust was all about. I would not like to give, I won't be able to explain it in like 15-20 minutes what it is. But after this webinar, I would suggest you to check that also. That is also one of the booming field. ESOPs taxation, joint development agreement. We just have one section in Income Tax Act for joint development agreement, and on that one section we have had 1.5 months sole assignment on that particular section. It is so complex in itself. Conversion of company into LLP or vice versa, public limited to private limited. DTAA, which you might be familiar with, that is double taxation avoidance agreement with different companies with different nations which India has signed with. Repatriation of funds from company to its shareholders, be it from buyback or be it declaration of dividend or or taking debts and then sending it back to the shareholders, or any other way. IPO advisory is also included in amended taxation. Then there are a few assignments which we get like reply to the notices. So somewhat we are also included in the litigation scheme. Then a major question which arises here is that all of this is only related to taxation. What about the other laws? So amended taxation is one of the very few fields wherein you get the exposure to FEMA, to RBI, to SEBI, SEBI laws, the laws and regulations involved therein. I have been doing two assignments when we had to compound the contraventions which were caused under FEMA regulations. So FEMA regulation, all in all, now we don't have at intermediate level, but but I believe that RBI Act or the FEMA Act or the SEBI laws, the Security Contract Regulation Act, which we have, you get a very high overview and deep insights about why these regulations were formed and what exactly what was the purpose and where exactly it is being used. So these are all in all what different types of assignments that are involved. The list is unending, but this is what where I got my exposure. So I have a couple of 2-3 questions which I would like to answer, post which you can ask your own questions. How did I got into M&A taxation or in M&A field itself? Was prima facie, I was pretty sure that I did not wish to get into a compliance domain. That's why I was looking more for advisory. And after my results were announced, I started connecting with people on LinkedIn who were in the same domain. I had my teachers also who guided me, and they also gave me some good references. After that, I'm the people who are actually working in this field. Those are the people who would really give you an insight about what exactly it is. Those who have not done anything in M&A and they are just blabbering some big words like हाँ यार ये बहुत अच्छा है, तुम इधर जाके करो, ऐसा होगा वैसा होगा. Don't listen to them. Take opinion of 3-4 people कि कैसा experience है. This thing is subjective and you have to take your own decision. But start sending your mails, your resume. This is a niche field which people are very reluctant to join because they think that their पोस्ट क्वालिफिकेशन अपॉर्चुनिटीज माइट रिड्यूस, या फिर एकदम ही नीश हो गया तो मुझे फिर बाकी कोई फील्ड में मिलेगा क्या.
So I talked to a few chartered accountants. So the domain in which you do your articleship, it is not necessary that you have to continue it post qualification also. You may change it. It gives you an upper advantage if you have done that articleship there only, but that is nothing a restrictive thing which has been put upon you. What are the questions they ask in interview preparation at the articleship stage? We have fair background up to, I guess, carry forward of losses or I don't know what section, up to what section we have in intermediate. So they'll require a good conceptual knowledge. I'm not saying that you have to ratify the sections कि क्या है, कैसा है, मतलब section number में क्या है, subsection क्या है वगैरह. No. What is the conceptual knowledge you have about that section? Do you, I mean, the base purpose for which the section was introduced or where it is been used? If you are well versed with that thing also, then I would say that it is a net gain for you. Some the latest budget, I would say that in amended taxation, they are very, what you can say, keen on knowing that how you are well versed or you are aware about the latest taxation development. So there are new developments which have been coming every now and then, including the budget which comes every year. So I would say that keep your hands on these things, because there might be two questions at least wherein they would ask you the amendments in the budget or amendments in any circular or notifications by CBDT. Some brownie points you can include is DT. If you read any DTAA, and if they ask you if you have any knowledge about international taxation, so you might say that yes, I have read this. This is available on income tax website. And the major exercise which happens during M&A interview is they would ask you to open the income tax website, give you a random section. For example, let's say 45.4 section, any section, for example, capital gains, we work majorly in capital gains. That's why they'll ask you from there only. And then they'll say that read the bare law and understand and tell me what it means. Right now, we have been given the study material very curated, and that's why it becomes very easy for us to interpret. But the real world is very different. Let's say about capital gain account scheme also, there are so many controversies involved around that specific term, capital gain account scheme. So they just want to know that how well you are with interpreting the law, and you not need to have much deeper knowledge about the sections which were not touched upon in the intermediate, but just a conceptual knowledge. Or if they open the website, if you open the website, what do you understand from it? This is what they expect. So what there is one more question, what work you get as an article? That is also an important thing I feel that everyone should know. All the assignments which I listed down in which I was working, initially the major role where I was involved was research work, wherein our seniors have floated a transaction or a way how this would proceed, and what are the nuances and intricacies involved in those from income tax or any other regulation perspective. So an assignment where we spent roughly around 2 months was about an insurance company, and we had to read through all the regulations of insurance, IRDAI, along with SEBI, along with IRDAI, SEBI, income tax, companies law. Companies law also play a very vital role because we have here buyback, right issue of shares and everything. So this is a kind of work where you develop your habit of questioning or finding, the ways out or the carve out, and the ability to question your research work. You gain multiple knowledge on many different topics you touch upon. You at the initial stage you won't be getting an end-to-end assignment, and for the first 2 years of articleship I don't believe that you will be getting an assignment on your own. You have to work under someone else only, because every assignment is of a different kind. But all in all, the exposure is really nice. If it's about listed companies, you won't be involved in the meetings also, because the client is very reluctant to share information with articles, because we are the most junior in the organization. But yes, in the online meetings you might be involved, and then as you move to the third year of articleship, I believe that you get an assignment on your own. So these were the questions and the main concepts which were used in this in this my 1.52 years of articleship. What were the main sections in which I was working upon was capital gain in its entirety, merger demerger, definition of merger demerger, I mean amalgamation and demerger. इस बस ये दो definitions पे पूरा खेल भी है. Like there are many assignments that are involved, like tax neutral merger, tax neutral demerger, etc etc. इस पे कम से कम 6-7 assignment हमारे पूरे टीम ने 5-6 months में किए रहेंगे. Team is roughly about 10 to 12 people. So this this field is all about. Then there is a focus on income from other sources like 56 to 10, 56 to 7B, then interpretation, slum sale.
slum sale versus itemized sale. Then we have intangible assets. These are the different types of sections where we touch upon. Uh, Another question which I feel I should answer is, people think that this is a very niche field, and I would not deny that yes, M&A is a very niche field, but this might be one of the most booming fields which you can see in the coming period. With the advent of artificial intelligence, you can expect that compliance might be replaced to a certain extent by AI or by automation. But advisory is something where it will take huge amount of time for them to get replaced by AI. So I don't believe, on discussion with many industry experts as well, I believe that 10 20 years down the line, this field won't be replaced more than 20% by any other you know AI or any other software, because this is where our mind needs to get applied, and this is at the higher level, that is the managerial level, which things happen. And the working pressure, I would say that this is again a subjective concept in itself. My team fortunately was good, so I did not have much of pressure, and they understood that we have our final exams due. But there are a few teams in other at other branches of EY wherein they have been working day in and day out. This is not like a compliance thing where you know that 30th September is the due date, and after that then ठीक है तुम थोड़ा chill हो जाओगे वगैरह. This depends on the urgency of the assignment कि वो कितने कितना अर्जेंट और कितना सारा वर्क इन्वॉल्व है. There are days when I was sitting idle for 2 to 3 days, and अचानक से फिर एक दो असाइनमेंट ऐसे आ जाते हैं with so deadly timelines that I had to work 12, 14, 15, 17 hours, also 17 hours a day. So literally ऐसे भी दिन थे. So work pressure is a very subjective concept. You have to take a decision on your own. And the question that whether we should be doing it from Big Four or a mid-sized firm, this question generally does not arise in this domain. The reason being कि M&A taxation mid-sized firms generally cater नहीं करते. Upper mid-sized firms and Big Fours ही देते हैं. And I would say that if you are doing it from Big Four, you would have advantage on you of many. You would have many different advantages, like listed companies का काम आ जाता है, and बहुत you can say it's very nicely tailored work which you get, and you understand the importance of presentation, the discipline, and the communication skills where you might want to improve or touch upon. So all in all, this was from my end. Any questions I'm open up to. Nothing? You can ask your questions by turning your mic on. Hello. Yes. Hi, Nikhil. Hello. Yeah. Hi, Rajat. So I wanted to ask that how difficult it is to change, like you change your company in the middle. So how difficult is it if I go into one field and I don't like it and I want to change the field. So how difficult it is to change the field in like top companies? So the transition is getting from a Big Four into a mid-sized firm is relatively easy because Big Four generally don't hire transfer cases. You need either a strong reference over there. No, you just need a strong reference over there because, or maybe up to 3 months you are doing in a mid-sized firm and then you decide to get into a Big Four. That is also fine. But after 6 months or after 10 months, then you decide that you want to get into Big Four. Then I doubt there are hardly any cases I see on my floor. So I would not recommend that. If you are unsure about which domain you want to choose, try for Big Four first, and after that you might move to some mid-sized firm. Yeah, okay, Kavya. I'll share it on the Telegram channel. Yes, then that's it. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Rajat, for time and enlightening us with what M&A tax exactly is. And I hope everyone here would be clear about what is M&A tax. So thank you so much. Thank you. Okay. So moving on to our next domain, it would be direct taxes.
And for direct tax, we have Tejas Lapteshwar, who has an experience of around 1 year in direct taxation from Ahuja and Valecha Associates, which is a very good firm in Pune. Yeah. So, hi Tejas, over to you. Hi. Is my voice echoing? Yes, Yes, your yes. voice is echoing. Hi. Yeah. Yes. Hi. Good afternoon, everyone. I'm Tejas Lapsetwar, and sorry, and I'm currently pursuing my articleship in direct tax domain in Ahuja Walichan Associates, Pune. So let us start with what exactly is direct tax services. So before entering into direct tax services, we will discuss what is direct tax. So direct tax are the taxes levied by government on the entities and individuals. So what and direct tax is a essential part of the chartered accountancy because it is getting complex day by day. So फॉर एग्जाम्पल आप बैंक अकाउंट भी खोलते हो कोई सो पोर्टल पे रिपोर्ट हो जा रहा है सो हर चीज गवर्नमेंट के पास है और लॉ जो है वो कंटिन्यू कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है सो हमारा काम है कि जो एंटिटीज और इंडिविजुअल्स है उनको गाइड करे कि ये कॉम्प्लेक्सिटी में से कैसे जाए सो व्हाट वी एग्जैक्टली डू इन द डायरेक्ट टैक्स सर्विसेज सो सबको लगता है कि डायरेक्ट टैक्स है तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग ही होगी बाकी क्या ही होगा इसमें सो दिस इज द बेसिक थिंग जो कुछ सालों बाद तो ऑटोमेट हो ही जाएगी एंड दिस इज द ओनली थिंग विच विल गेट ऑटोमेट Mm. सो Hi Tejas, फर्स्ट थिंग sorry to इज interrupt. Your voice is going a little bit. आई डोंट नो व्हाई इट्स सो Uh, Try rejoining it once. वेट अ सेकंड Yeah. या हाय नाउ इट इज ओके If you can. Try rejoining once. इज इट नाउ ओके नाउ No, it's echoing. Try rejoining once. Leave and rejoin again. ओके या हाय इज इट ओके नाउ There is some issue now also. So let's try to continue. We'll see. okay so the basic work is income tax return filing so we will help clients to complete their compliance within the deadlines so second thing is tax planning we will मतलब हम क्लाइंट्स को बताएंगे कि कैसे आप टैक्स को प्लान कर सकते हो आपके हिसाब से सो थर्ड थिंग इज टैक्स एडवाइजरी मतलब इसमें अपन एडवाइस करते हैं कि क्लाइंट को कि ये ट्रांजेक्शन पे कैसा होना चाहिए टैक्स नेक्स्ट थिंग इज रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन मीन्स मतलब क्लाइंट को लिटिगेशंस वगैरह आते हैं सो हम क्लाइंट के बदले रिप्रेजेंट करते हैं कि आईटी एटी सी आई आई टी के पास कि क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं इन शॉर्ट और ये कुछ चीज़ें और चीज़ें होती हैं मतलब टैक्स ऑडिट सपोर्ट में देखते हैं कि जो भी टैक्स कंप्लायंसेस है वो कंपनी ने फुलफिल करी है कि नहीं और वो रिपोर्ट कर देती जो जो कंप्लायंसेस फुलफिल नहीं करी वो अपन रिपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट के पास सो उसके बाद लिटिगेशन सपोर्ट टैक्स प्रोविजनिंग टीडीएस ओपिनियंस ये कुछ चीज़ है एक्सपीरियंस की बात करोगे सो डायरेक्ट टैक्स में मैंने एक सीखा कि आपके पास जितनी भी नॉलेज है इनफ नहीं है एवरी डे इज अ न्यू बिगनिंग मतलब इतना कुछ सीखने लायक है ना कि आ, आप रोज भी कुछ सीखोगे तो भी 3 साल में खत्म नहीं होगा और डायरेक्ट टैक्स में ये भी अच्छा है कि आप क्लाइंट से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हो
सो जब आप क्लाइंट से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हो तो आपको लोगों के बारे में पता चलता है, सो आपके फ्यूचर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। सो आपका कोई क्वेश्चन है? Anyone wants to ask any question related to articleship experience or interview experience? Yeah, sorry. You can unmute your mic, and it's not necessary that you type in the chat box. You can unmute the mic and ask your question. Tejas, I will ask you one question. You are completely in direct taxation domain, so how does it help in your studies, CA final studies? CA final studies, actually I haven't started it at all, Okay. बट सिलेबस जितना देखा है उससे Hmm. ये समझ रहा है कि जो भी डायरेक्ट टैक्स वगैरह पढ़ूंगा मैं उसमें टाइम नहीं लगेगा मुझे, Hmm. Yes. सो इट विल बी कवर्ड इन आर्टिकलशिप ओनली। You will cover और most डायरेक्ट of the टैक्स से नहीं aspects in मतलब practical. अकाउंट्स, Yes. या Hmm. Yeah. Continue. या लिटिल बिट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, Hmm. ये भी आर्टिकलशिप में ही कवर हो जा रहा है, सो Yeah. हेल्पफुल है थोड़ा। And how is your experience in a mid-sized firm? Like, what's the work मिड pressure and um, या mostly देखो, people say that taxation is comparatively uh, less than the statutory audit domain. Work pressure is comparatively less. So, what's your point? ऐसा कुछ नहीं है कि कम है, मतलब Hmm. हम भी रोज 11-11 बजे घर पे आते हैं, वर्क प्रेशर Okay. सेम ही है। सो Mm-hmm. आप कौन से फर्म से करते हो उस पे डिपेंड है। Yeah. सो इफ यू आर गोइंग थ्रू अ स्मॉल साइज फर्म और अपर Hmm. स्मॉल साइज, फिर भी उतना काम नहीं होता है, क्योंकि ना उधर टैक्स होता है ना टीडीएस, ना ये नॉर्मल रिटर्न फाइलिंग और नॉर्मल काम होते हैं। Yeah. सो इधर अकाउंटिंग से लेकर टैक्स ऑडिट तक सब कुछ होता है साथ में, Hmm. सो वर्क प्रेशर इज सेम। Anyone wants to ask any question relating to direct tax? Yes. यस, पूरा एक सीजन चला जाएगा, सीजन मीन्स 1 ईयर ही लगेगा पूरा पूरा नॉलेज आने में, ठीक है। Tejas, can you unmute once? या सॉरी, Can you mute and unmute once? Voice is echoing. Okay. या इट्स, इज इट ओके नाउ? Yes. या, एनी अदर क्वेश्चन? Shruta. So whichever field you will choose, you will take at least 6 to 7 months to understand what the basic is. Because in the या first 1 or 2 months, you won't be getting much idea. But later on, as you get some experience, you will be getting more work to do, different types of work to do. So it will take around 7 to 8 months to understand actually what you are doing. Yeah. या, एनी Any other क्वेश्चंस? questions? ओके, थैंक यू देन। Thank you, Tejas. Thank you so much, Tejas. So, moving on to our next domain, we'll be starting with valuations. So, for valuations, we are having Ankit, who is working in valuations domain from Transaction Square. He has an experience of around 1.5 years, and he is also a CFA level 2 candidate. So, welcome, Ankit. Over to you.
Hello guys, am I audible? Yeah. Yes. Fantastic. So at the outset, congratulations to everybody who's scouting for articleships now. So I mean, you've passed the inter, so you're halfway there. Congratulations, and also a big thank you to Varun and Srishti for doing this. I mean, I'm sure it helps a lot of aspirants. So to begin with, I think I'll dive right into it, and I'll expand upon the point that Rajat said. Valuations and M&A tax generally go hand in hand. So whenever there is an M&A tax activity, more often than not, there is a valuation trigger point. When I say a valuation trigger point, I mean when there is a when there is a merger, you have to give a share exchange ratio. When there is a demerger, you have to give a share entitlement ratio. Or when there is an overseas investment from India outside, so you have to value the shares as per your FEMA guidelines, as per your income tax act. Even when there is issue of shares by an unlisted company under section 621C of the Companies Act, because you're issuing unlisted because you're issuing shares of an unlisted company, you're again supposed to value them. So it's not just this. There's also reporting requirements or valuation requirements in India's, be it under 32 109 and others for financial instruments, where you are supposed to uh, keep the liability component and the equity component for convertible instruments, or even ESOPs, even the other things where you have to impair, where you have to impair other, where you have to impair goodwill and other investments. Also, also valuations is very pertinent when you have to do when you engage in business combinations. With business combinations, I mean mergers, demergers, where you have to recognize goodwill, where you're trying to maximize your benefit so that your goodwill is least and you can recognize more intangibles so that you get a tax break on them. Not just this, then there are other assignments that we end up doing, which is like creating a financial model for startups, for businesses, maybe valuing a group business, a family business, so that they are restructuring. In case they are restructuring, which generally an M&A tax team does, whereby under a succession plan or a family settlement plan, they generally restructure a family business or any business for that matter. So then trying to value the business so that the uh, settlement is amicable and equal, we end up valuing those. We also oftentimes managements of startups or even companies that are trying to go public, they want to value their companies so that they have a sense of what they can expect from buyers, sellers, and generally, while most of the work is regulatory in nature, as in when there is a 60 to 1C from Companies Act, or maybe FEMA regulations or FEMA ODI or whatever, while that would be a 70-75% of your work where you're valuing companies for the purpose of that report, and maybe using methods which I'll discuss later. Um, and then you also have purchase price allocation, which you tend to do when you acquire anything under business combinations. I think in layers 103, if I'm not wrong. So then that's what you do. So where you recognize goodwill, intangible assets, because you cannot recognize internally generated intangible assets. Those assets are never recorded in the net assets of the acquired company. So, or company or the business for that matter. So then when you do a PPA, you recognize those intangible assets also, and then you have to value them. That is there. Then there are oftentimes fair value reporting requirements under the Ind-AS or IFRS or even US GAAP for that matter, where you have to value exotic options written or owned by the company, which do not have. So in my year and a half that I've been working at Transaction Square, we valued put options, call options, exotic options, swaptions. So this is basically what somebody would do in a valuations field. Of course, you get modeling and internal assessment evaluation deals as well. So to name a few deals, I've done a few deals where there's been listed companies involved in a merger. The ones which
uh, I mean, similar to the ones Rajat was referring. So that is where a valuer or a valuations perspective comes. So then there are again three main approaches to valuing anything. One is the cost approach, that is cost or the replacement cost approach, whereby you'd say that the value is essentially what you would get from what it would cost to build another thing of the same kind or anything of that sort. That is the basic idea. Then there's the income approach, which you might be familiar with, the discounted cash flow approach and all of it. And then there's this market approach where you value it basis metrics of similar companies which are generally traded or which have had transactions, where you have an EV EBITDA, a price to earnings multiple, which you must be familiar with, or a EV EBIT, or even sector specific multiples like a price to book multiple for uh, banking and NBFCs, or other multiples. So that is what we generally do. So what else would I like to cover? Yes. So what is expected from interns in a valuations team is, at least because you've just cleared CA inter, they don't expect a lot. They just want for you to have a basic understanding of how what would affect cash flow, because most of the assignments, I'd say 50-60% of the times you would be ending valuing things on a discounted cash flow basis, because that is the most preferred method by most people to value. Most companies, like if you discount a few companies like insurance companies or maybe banks where you don't use a DCF, then there are other companies where you end up doing a DCF. So there, what what would you be expected as an intern or an article? You or at least when you're giving an interview, you'd be expected to know what changes in working capital would do to your cash flow. Say if your inventory is rising year on year, that implies that it is a negative working capital change for your cash flow. So all these things are what somebody would like to know. I understand this is a new field and I may not have covered everything, so I'd be happy to answer whatever questions you have. Hi, Ankit. Hi, Nikhil. Hi. Am I audible? Yes. Yes, so I wanted to ask that, like personally, I haven't heard much about this field for articleship, like for valuation articleship. So, what are the top companies where we can look for articleship in valuation field? So, in my understanding, there are only two of the big six even have a valuations department that hires interns. That's EY for Bombay. EY hires in Bombay, and BDO hires articles for valuations and deals. Then there are other companies like Transaction Square, which hires interns. Then there's Acumen, which also has valuation interns. Although these are generally boutique investment banks or uh, boutique transaction advisory firms that would hire you. So valuation comes under the broad category or a broad umbrella of transaction advisory services, which generally boutique and specialized firms or big four, big six only tend to provide. So as you might know, I mean, Transaction Square is a boutique transaction advisory firm where we just do M&A tax, indirect tax, financial due diligence, and valuations or allied services. So that is where you'll get to work, basically. Okay, thank you. Yeah. So, Ankit, I would like to ask like your work and practical work in your articleship. So, how is it helping you with this final studies? And also, you have cleared your CFA level 1. So, did that help you there too? Yes. Firstly, I haven't been very consistent or with my CA final studies, so I'll just park that question. But when I'd say with my CFA level 1 and CFA level 2, yes, it has certainly helped, because what I tend to do, in my work environment, where we end up valuing options, where we end up looking at things, where we debate or how an approach should work when you're valuing a specific company, or even how our internal trainings work, we generally it does help to know what is going on, and it is much easier for me to
understand the concepts which the CFA curriculum has laid out. Also, CFA curriculum is much more practical than the CA curriculum. So, having WorkX here, WorkX in this field does help. I mean, I'm sure the panelist on for investment banking would agree if he's written or if he's appearing for the CFA exams that WorkX does help. Okay. So anyone in the audience is having any questions, so please ask. I have another question. Yes, Nikhil. So if we apply to companies, so what extra knowledge we require, like they expect from us for the interview? So, so you'd probably be familiar with the CAPM model, capital asset pricing model, which you would be expected to know. As in, you should know what RM is, what RF is, what beta is. I mean, even a crude understanding, nobody's expecting you to know that beta is the regression of the security to the market that you're assuming. But you should just know that it is a basic sense of what anybody hiring for a valuations role is trying to do is a sense check on whether you understand numbers, whether you get the inherent intrinsic logic, because this is a field where there are often many interpretations, where you have arguments with your seniors, where you have a stand, where you try to back up your stand, because there is no hard and fast rule like maybe tax or a audit where you have to do it this way, this way, this way. There are multiple approaches to solving a problem. So that is where what they are trying to figure is whether you have a understanding of understanding of how numbers would flow, or how it would make economic sense, because things often don't make mathematical sense but they have to make economic sense. So that is important, and ability to set late nights, that is, I think, very crucial for anything that is related to um, like finance in general, where you have deals coming in, be it M&A tax, be it IB, be it valuations, be it FDD. You have deal pressure, you have to close the deal and you have to sit. Yeah. Thank you. Good. Okay, so anyone is left with any of the question, or should we move on to the next domain? Okay, so thank you so much, Ankit, for joining us and sharing all the knowledge and all such important tips. So thank you so much. Thank you. I hope you guys get what you. Good luck. Thank you. Okay, so moving on to our next domain. So we are having investment banking domain. And for investment banking, we are having Abhishek Bang, who is having a 7 months of work experience as an article assistant in Grant Thornton, Mumbai, in statutory audit domain. And now he is currently in BDO Mumbai for investment banking, and he has around 4 months experience there. So welcome, Abhishek. Over to you. Good evening, everyone. It's great that everyone has joined on a Sunday evening. I can see the enthusiasm that you have to join. I would completely agree with what Ankit said, that there is a lot of subjectivity involved in it. There is no hard and fast rule. So, if we have to segregate IB, there will be a buy side and there will be a sell side. Firstly, why I'm saying this? When I was being interviewed in video, there were three or four other people with me. So one common question that was asked was, "What is investment banking?" And many of those failed to answer that. So what do you think? What investment banking is? If I can ask anyone, Nikhil, Kutarth, Arnav. Go on, go on. Hello. Hello. Yeah, you are Oh, audible. Yeah, am I audible? yeah. Huh. So I think investment banking, we deal with clients and we like consult them in things where like, they ask us if a particular investment is feasible for them, it is beneficial. So they uh,
we study the investment and we consult them whether it is profitable or not for them. That is my To understanding. some extent, you are correct. Yeah, I agree with you. So, if I have to say in a layman terms, it's dalali ka dhanda hai, nothing else. You are just a broker. You are assisting in a merger and acquisition deal, or you are assisting in a fundraising deal. So, there are two types. One is buy side, and then there is a sell side. Buy side is where you are assisting your client in buying a company, and sell side is where you are assisting him in fundraising. All right. So it is a kind of subjectivity involved rule. There is no hard and fast rule. And I guess Ankit was saying this. I would completely agree that there is no hard and fast rule as such, but a lot of accountability comes on you when you are doing the work. So there is a lot of freedom that you get, unlike in tax and audit. So it's a role which is in demand. I am not aware about Pune, but in Mumbai there are a few firms who are looking to hire in IB. Uh, if I talk, uh, let's say, of fundraising, how does a fundraising look like? First of all, you have a client who have to raise a fund for a particular reason. It might be for working capital or for expansion plan. Then you, being a iBanker, you come into the picture to help them in fundraising. So there is a client, and you are a broker in between, and you have to get in the investor. यहाँ पे खत्म नहीं होता है. Then you have to do the valuations. Then there is an FDD, which is financial due diligence. I would say FDD is an extended audit, which you can explore in your audit as well, in your articleship as well, to get into iBanking, I would say. And you being the broker between company and the investor, you have the whole and sole responsibility, and you earn commission based on that. So this is how an iBanking deal look like. And being a trainee, so all of you guys might be looking for articleship. A trainee, much more role is on research part. You have to do research of different types of sectors and all. And the second is about financial modeling. So you don't necessarily require to learn financial modeling from start, but as you onboard into the company, that is a learning procedure. Anything question that you want to ask, then I can go ahead with that. I have a lot to say about it. Shishti, Arnav, any questions till now? इतना भी बोरिंग नहीं है यार आई बैंकिंग. We have a question in There the is one chat question. box, Abhishek. Yeah. Just a second, let me check. How was your experience in steroid that has been making? Yeah, so I was asked this question. So definitely, I'll share my experience first. So I was working in steroid for 5 to 6 months. Then I was being interviewed for iBanking role. So the first question they asked me, see, I was working with an insurance company. That was a big insurance company of top one of top three. I can't take the name, of course. So they asked me, what have you learned there? How does an insurance business work? How does a balance sheet work? That was I was asked. So whenever you are trying to shift your roles in articleship, know what you are doing, because I was asked this. And about start audit part, I would say, how to read balance sheet, how to read cash flows, what are the main ratios, what you look into company. This is all what you do. So in iBanking, there are two parts. One is business development, then there is a deal. So business development में you have to see different companies you can potentially target for fundraising. उसके लिए you need to know how a balance sheet looks like, how balance sheet flows, how cash flow flows, how P&L works, because everything is correlated. You can navigate through balance sheet to P&L to cash flow and vice versa. You have to know all of it, and stat audit experience will definitely help in it, provided you have mm, worked that much. There is one more, Aswath Damodaran, I would say. Ankit must have seen those. Aswath Damodaran is a faculty at Stanford, no, NY Stern, I guess. So his videos are really, really helpful. And as he said, the CAPM model, I was asked about that. What is beta? Yeah, yes, NYU Stern. So what is beta?
explain beta me in 1 minute or one sentence. These were the kind of questions that I was asked. So you need to know and start audit what you have done and what we expect in iBanking. So I think that answers the question. Now you starting your articleship, what you should focus upon if you are being interviewed in an iBanking. I would say you need to know what are the different types of valuation techniques. Firstly, there is fundamental valuation, there is relative valuation, and then there is asset backed valuation. You need to know it just out of it and just brush up your FMECO part. FMECO part is the most that you can do to be relevant for the role, I guess. And rest you will get to know when you are on board with the company. Mm. Any questions? Yeah, Varun over there. Varun can definitely tell you about stat audit. I know how much it works. Yeah, I'm pursuing CFA. I have my attempt in August. Hmm. Definitely, it gives you an upper edge. If you look at CFA curriculum, it is more of a practical based approach than a रट्टी fine approach. तुम रट time आते हो at the end of the day audit and all में. So it is a more practical based approach, and the subjects are vast as well. Cost of capital, you get into know what is why, you get to know the ratios why. If I say the ROC is EBIT upon capital employed. So what is capital employed? Capital employed में ये क्यों आता है? Why the formula is that? Not knowing what is formula, but why the formula is like that. So CFA really helps in that. And one thing I would say that there is not much statistics and economics involved in CA curriculum. And if you look at this CFA curriculum, there is a lot covered about eco and statistics part, I would say. So it will be a good combination to have a CA and CFA degree. That's what I think. Any other questions? So if you are looking to join any firm, I can definitely suggest in Mumbai. As of now, BDO is not hiring any trainees in this attempt. They'll definitely hire in next attempt. BDO में statutory audit interview के लिए ऐसे या नहीं ऐसे stat audit guy will tell you that. Sure, it will be covered in stat. Okay, yeah, Srishti has answered that. So in Mumbai, there are a few firms that are hiring in IB, but if you are not, I think valuations is a relatively similar option to iBanking, I would say, because iBanking में at the end of the negotiation होता है ना, trainees are not a part of negotiation. One more thing I would say कि you might be assuming कि iBanking में articleship करने से you'll know everything about deal. About functionality you'll know everything, but about technicalities when you are actually doing it, you know about functionality, you'll know how a deal flows, what are different agreements. So if I say about a sell side deal will look like that. You have a company, that company wants to raise a capital in return of some equity percentage. So you get an investor with it. So then there is a NBA, non-binding agreement, where investor agrees to invest in that company, provided that these rules are there, these conditions are satisfied in the company. Let's say EBIT is this much, sales is this much, क्योंकि company तो project करके कुछ भी दे सकता है. Then after that FDD happens, financial due diligence. Then iBanking का role थोड़ा कम हो जाता है. For financial due diligence, then there's an extended audit part, as I said. After FDD, investor would sign binding agreement where he agrees to put in money into the company. So you have to look into that, and you need to have just about those PE, VC, what is PE, what is VC, what is angel investor, IPO, and all. What are the exit plans? So a lot is covered in CFA curriculum, I would say. Mm. Anything specific that you want to ask about work?
Anything, guys? Drishti, Prachi, Arnav. Okay, I'll ask you one thing, Abhishek, other than the practical work, like Hmm. you're pursuing CFA also. So Yeah. CA final की भी अपनी पढ़ाई इतनी ज़्यादा है और प्लस CFA. So कैसे मैनेज हो रहा है या फिर अभी सिर्फ CFA के ऊपर फोकस चल रहा है? Uh, I would say a month and a half or a 2 months fully dedicated preparation to CFA would work, and I would say get your SFM done before doing CFA L1. That's what I'll personally recommend. कि SFM में बहुत सारा cover हो जाता है CFA L1 का. That's why लोग ऐसा बोलते हैं कि CFA का लोग ऐसा बोलते हैं कि SFM का 60% is CFA. I would not agree with that. I would say CFA का 60% is SFM. So rest you have to do only 40% part of CFA, I think. So that would really help. तो तुम्हारा CFA SFM का भी रिविजन हो जाता है with CFA L1, and one can definitely look to do CFA along with CA. I think it can be definitely done with articleship. And what are the working hours in investment banking? As we say, investment banking is workload is very high as a professional. But what is the working hours as an article? I am a bit fortunate enough to join in a team which is a bit considerate about working hours. My team is relatively new, so I go around 10 and I come around 8. And someone was asking EY's work pressure. Kajal Jindal, you can definitely ask That I Varun. will cover. Varun can definitely answer his working hours. What are your working hours, Varun? Depends. We will cover in audit. Sorry? It depends. We will cover that in state audit. The speaker is also from UI. He's just being modest. I know his working hours. Nice. Anyone wants to ask any questions for investment banking? Yeah, happy to answer. And we will share the LinkedIn profiles of all the speakers. You can connect to them later also after the session for any queries. Yes, definitely. One thing I would like to add, कभी कभी क्या होता है, mostly the iBanking firms have started to hire articles now. पहले होता नहीं था. So how you used to get into iBanking? So industrial training is a good option. So if you're not getting articleship in iBanking as of now, you can definitely look for industrial training, I would say. Get into Big Four or Big Six, get a good brand name for 1.5 year and 2 years, and then you can definitely try for industrial training. There are a lot of opportunities in Mumbai. About Mumbai, I can definitely say about equity research, investment banking, all. You should definitely try. And one thing that really helped me is reading newspapers, knowing what is happening in industry as of now. So try to read newspapers, or if not newspaper, try to get a hand on it. कि क्या हो रहा है and why it is happening. If not poll, that would definitely help. And another thing I would say, it will help you in being a better communicator. जब आप चार लोग में हो, if you know about a thing, you can definitely talk about it. You will not be a introvert guy and all. That I can definitely say. About books, I would recommend two books. One is by सार्थक बाजी की बुक का नाम Daily Coffee and Startup Fundraising, if I'm not wrong. Daily Coffee and Startup Fundraising is a good book. You can definitely start on with it. I really loved that book. It really shows how P&L, cash flow, and balance sheet flows, and what investors look like, what investors look for, and what iBankers look for. And then one more is there is Founder's Office. It has been recently released 2-3 weeks back. Same by Sarthak Ahuja. I think that would definitely help. Any specific questions? Or I think this is well enough. You can connect with me over LinkedIn and ask any specific questions if you want. And build your resume really well, I would say. Your entire articleship interview will revolve around your resume only, because the interviewer himself knows that you have not worked as much
एज मच किया, तुमने काम ही नहीं किया है. सो ही लुक्स फॉर योर एटीट्यूड, हाउ यू really, how you badly want to work for it. So get done with it, I would say. That works, Varun, Shrishti. Yes, anyone is having any other questions? Or you could connect with Abhishek on his LinkedIn. We'll be sharing the. Okay, Yeah, someone I has guess my raised. voice, I guess my Paridi. voice was not a bit clear. Actually, I'm out for a work and I'm joining from there. You can definitely reach out to me. I think Paridi Yeah, has. Yeah, Paridi has. Pariti. Yeah. आई जस्ट वांटेड टू आस्क, जैसे आने वाले 3-4 साल में फ्यूचर में किस डोमेन में सबसे ज़्यादा स्कोप होगा? उसके लिए मेरे को जैसे आर्टिकलशिप जॉइन करनी है, तो मैं ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर फील्ड में है। मैं किसी डोमेन में जाऊँगा तो मैं अपना पूरा 100% दे के मैं उस फील्ड में अच्छा कर सकता हूँ। तो मैं अभी कन्फ्यूज़ हूँ कि मुझे किस डोमेन में चाहिए, जैसे कि आने वाले टाइम में मैं एक अच्छे मतलब जगह पे अपने आप को देख सकूँ इसके लिए। जिसमें तुम लोग मजा आता है वो सब अच्छा है. There is always room at the top. I really loved FMECO, that's why I went here. But I would say this world looks a bit fancy. So fanciness में मत जाओ. Whatever you like, do that. And you, as you said that you really don't know what you want to do and all, get a cream of everything. I would not say to regularly change your articleship, of course, but you can get to know about different domains by talking to different people or s- just reading about it. YouTube will definitely help. So जो पसंद है वो करो, I would say. There is no specific answer to it. I think Varun would agree. Varun is such a dark horse, I would say. वरुण को क्या हो गया? हेलो वरुण. I think there is some network issue. या उसकी तारीफ करने जाओ तो नेटवर्क इशू हो रहा है. Definitely, I guess it works. If there is any other question, do let me know. Connect me with our LinkedIn. Happy to answer your any questions. Okay, so Yeah. if Thank you, Srishti. anyone Thank is you, Varun. not having, yeah, any questions, so we would end up with investment banking. Your LinkedIn, Abhishek Uh, Bang. yeah, we'll be sharing all the LinkedIn IDs of all the speakers in our group post the session, so you could connect with them there. Okay, Definitely best. so thank you so much, Abhishek, for sparing your And, time. And and just I now think when I'm Varun, you are. leaving, Varun का network issue resolve हो गया है. हाँ. Varun is such a dog Okay, horse. Varun. I guess Varun will definitely help you in related to Pune things and about articleship guidance as well and about study guidance as well. So thank you, Varun. Okay, Shrishti, that works. उसका network Okay, वापस गया है. yeah, sure. Yeah. Thank you so much, Bye. Abhishek, for joining us and sharing your knowledge. Okay. So, moving on to our next domain, we'll be starting with internal audit. So, for internal audit, we are having Vidhi Kanodia. She has worked as an article assistant in video internal audit in Bangalore for 1.8 months. And currently, she is doing her industrial training in Barclays, and she has completed over 6 months there in Barclays. So, hi Vidhi, welcome. Hi, Over to you. Shruti. Thank you so much, Shruti, for giving me this opportunity to address the young aspirants. So, yeah, I'll start off with I think I do not have to introduce her. She has already given that. So, I'll briefly tell you about internal audit and pose that if you guys have any sort of questions, you can feel free to ask me. Okay, I'll present my screen. I have a short PPT as well. Please let me know when my screen is visible to you all. That would help. Yeah, it's visible now. Okay, thanks, Shrishti. So moving on. So first of all, I'm not sure how many people would
first preference has in being an internal, because I believe at my time I always wanted to go in statutory audit, but somehow I went and joined internal audit. So first of all, whatever we study at an inter level, that internal audit could be done by anyone. Of course, there is no hard specific rule, but in practical life, no organization perform their internal audit function by just any random employee. They have these specialized people, they have their proper in proper segregated department, and they are the people who have expert and learning, who are expert in that particular domain. So they do the internal audit. Not any random employee can do internal audit. And second of all, there are a lot of learning, like the scope is entirely vast in internal. There are so many job opportunities. If I see now also, if you go on LinkedIn or maybe Naukri, there are a lot many opportunities are there. So I'll start off first, what is internal audit basically. So basically in internal audit, what we are trying to test or what we are trying to certify is that in an organization, the controls that are in place are whether they are operating effectively or not. It is a very simple definition which we study at an inter level. So for example, if an organization is working, now you have to ensure that okay, because in every organization there would be some risk in every process, be it in HR process, be it in order to cash process, be it in procure to pay process. At every step there is a risk, and to mitigate that risk there should be a compensating control, right? So at an internal audit we have to test whether the controls are operating effectively or not, and we need to ensure that how we can strengthen their controls by checking their operating effectiveness or not. So this is about internal audit. Now what in if you go into the practical world, somewhere you will see it's an internal audit department, somewhere you will see it's a risk advisory department. So it's one and the same thing, only a fancy name is given. So if I have to talk about what kind of specific assignments one can get, or what kind of specific exposure one can get if they join internal audit. So first is your IFC testing, that is your internal financial control testing. So as I specifically mentioned, that internal audit is about controls. So when I talk about testing, so here what happens, suppose I'll take an for example of a process example, HR process. Okay, so the first control should be that that an organization should have a detailed HR policy which talks about how an employee should be hired, what would should be the compensation benefits, what would be the exit process. So you have to test. There would be a test script. There would be a control. And then if the control is not working properly, there will be an associated risk to it, and you have to see whether a proper policy is there or not. If a proper policy is there in place, that control gets passed. So in that IFC testing, you have to only test that the scripts will be designed, the controls will be in place. You have to test whether the control is working properly or not. Okay, now when I come to internal audit. Okay, so in internal audit, you do not test, you do audit, you do examination of the entire process, end to end process. It is up to you. For example, they will give you, okay, you have to perform the internal audit of procure to pay process. Okay, so they will not say कि okay ये भाई यहाँ पे एक कंट्रोल है उसको टेस्ट करो. तुम्हें वहां पे खुद से देखना पड़ेगा कि पहले प्रोसेस को समझो. जाके प्रोसेस ओनर्स होते हैं, बिजनेस ओनर्स होते हैं, उनसे तुम्हें प्रोसेस समझना पड़ेगा कि भाई प्रोक्योर टू पे में कैसे होता है. सबसे पहले प्रोक्योर, अगर हम नॉर्मल प्रोक्योर टू पे की बात करूं, तो सबसे पहले क्या होता होगा, हमें वेंडर सेलेक्ट करने होते हैं. वेंडर सिलेक्शन के लिए भी हम कोट्स मंगवाते हैं कि अगर हमें सपोज हमें कोई solar panels suppose हमें procure करना है. So we will go in the market, we will ask for quotation, and then on the basis of कि हमें सबसे affordable rates, so quality अच्छी, and then we'll select one vendor, we'll place an order, then हमारा PO raise होगा. Once the PO is received, then we will raise goods GR, आपका GRN entry होती है, then invoicing होती है. Then this is the entire process how it goes. So you have to check the end to end process, the time when you're placing an order, the time you are invoicing it in the system and billing it to the vendor. This is the entire cycle you have to do in internal audit. You have to check every step. There is no controls defined. You have to design your own methodology.
So I would say, if you have to tell me कि if you will ask me what is the difference between IFC testing and internal, so IFC testing में अगर होगा तो वहाँ पे तुम्हें ऑलरेडी कंट्रोल है कि भाई इस प्रोसेस में मेकर चेकर होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर तुम ये बात करो कि मैंने अगर पीओ रेस किया है तो मैं उस पीओ को अप्रूव नहीं कर सकती. दिस इज द कंट्रोल एंड दैट यू विल टेस्ट इन IFC. बट व्हेन यू टॉक अबाउट इंटरनल ऑडिट, यू विल नॉट सी कि भाई मैंने पीओ रेस किया और अप्रूवर कोई डिफरेंस. तुम उसकी सारी इंट्रिकेसीज की डिटेल्स भी चेक करोगे कि पीओ कितने अमाउंट का था, ठीक है, अप्रूवल कितने अमाउंट का मिला है. मतलब तुम्हें चीजें डिफाइन करनी होंगी. इंटरनल ऑडिट जो होता है ना, इट इज आई वुड से यहाँ पे कोई बाउंड्रीज नहीं डिफाइंड है. यू हैव टू सेट योर ओन वेज टू फाइंड आउट द लूप होल्स कि तुम क्या क्या चीजें ला सकते हो. क्योंकि इंटरनल ऑडिट इज मोर अबाउट कि तुम एक प्रॉपर एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन में इतने प्रोसेस वर्क करते हो, तो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में इतने प्रोसेस वर्क करते हो तो तुम्हें देखना होगा कि कैसे अच्छे से काम हो रहा है कि नहीं. और तुम अगर सपोज अगर तुम्हें लगता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रैक्टिस है बट यू फील कि नहीं यार ये प्रैक्टिस अच्छी नहीं, वी शुड रिकमेंड समथिंग बेटर जिससे इनका प्रोसेस बेटर हो सके. सो इंटरनल ऑडिट इज ऑल अबाउट इम्प्रूवमेंट. ओके, ये आप, और अगर आप बाय वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज, बाय वर्ड्स ऑफ लॉ जाओ तो इंटरनल ऑडिट की भी अगर आप मैं कहूँ तो एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि अगर एक कंपनी की रेस्पेक्टिव टर्नओवर वो मीट कर रहा है तभी उसे इंटरनल ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है. और अदरवाइज जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो बहुत ही कहते हैं ना स्टार्टअप्स होते हैं जिनका टर्नओवर ही नहीं होता, दे कैन नॉट डू इंटरनल. उनके लिए कंपलसरी नहीं है, इट्स नॉट अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बाय लॉ. So it is something which is gives you an add-on benefit how you can further improve your process. Then next, moving on to SOX testing. Now, SOX testing is very much similar to IFC testing. The only difference is that IFC testing comes under the company's law. Okay, and for SOX testing, it is covered under the Sarbanes-Oxley Act. It is it was formulated as a part of the scandal that happened in I think 2002. It was enacted after the Enron scandal had happened in UK. तो दिस इज वाज द रिजल्ट ऑफ द सॉक्स टेस्टिंग. तो अगर तुम्हें सॉक्स में काम करने का मौका मिलता है इंटरनल ऑडिट में, तो अगर तुम्हारी सीवी में ये है तो तुम्हारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी, मतलब अगर तुम्हारी सीवी में यही लिखा है ना कि यू हैव डन सॉक्स असाइनमेंट्स, you will get n number of opportunities. Because why? The reason is very simple. आजकल जितनी भी MNCs है सबको सॉक्स कंप्लायंट करनी पड़ती है, क्योंकि उनका जो कहते हैं उनके जो ऑफशोर एंटिटीज के साथ, जो क्योंकि MNCs में तुम काम करोगे ना तो वहाँ पे यूके उनका काउंटर होता ही है पार्टीज का, तो उसको सॉक्स कंप्लायंट करना ही पड़ता है. तो दैट इज वाई इफ यू गेट एन एक्सपीरियंस और एन पार्ट अपॉर्चुनिटी टू डू सॉक्स टेस्टिंग, grab it. It is an add-on advantage. Then here comes your RCM building. Now RCM stands for Risk and Control Matrix. So if I go back to the part where I explained you IFC testing, तो IFC testing में मैंने तुम्हें समझाया कि कंट्रोल्स होते हैं, राइट, कंट्रोल्स को टेस्ट करते हो. तो वो कंट्रोल्स को डिजाइन करने का जो पार्ट होता है ना, वो हम आरसीएम बिल्डिंग में करते हैं. सपोज कोई क्लाइंट है, क्लाइंट ने अभी अभी रिसेंटली उसने रिक्वायरमेंट मीट की एज पर द लॉ कि नाउ दैट पर्सन हैज टू मैंडेटरली डू देयर IFC टेस्टिंग एंड परफॉर्म इंटरनल ऑडिट. तो अब उसके पास उसकी कंपनी में उसको एक मैट्रिक्स डिजाइन करनी पड़ेगी, कंट्रोल्स बनाने पर. उसके पास हो सकता है कंट्रोल्स ऑलरेडी हों, बट उसको कहते हैं ना एक प्रॉपर फॉर्मेट में लाना, दैट इज योर कॉल्ड आरसीएम. उसके लिए वो क्या करते हैं, ये आपकी जो बिग फोर्स है, बिग फाइव है, जो इंटरनल ऑडिट में स्पेशलाइजेशन करते हैं, उनको वो हायर करते हैं कि भाई आप हमारा प्रोसेस समझो, और उसको पूरे प्रोसेस को समझने के बाद आप हमें उसे आरसीएम में इनबिल्ट करके दे दो. और फिर आरसीएम जैसे हम बनाते हैं उसके बाद हम उसकी टेस्टिंग करते हैं. इफ यू रिमेंबर योर ऐसे, आई बिलीव आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द एग्जैक्ट ऐसे नंबर, जिसमें हम करते थे डिजाइन इफेक्टिवनेस असेसमेंट, जहाँ पे हम जब हम कंट्रोल को डिजाइन करते हैं हम उसकी पहले टेस्टिंग करते हैं. फिर जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, कि वंस द कंट्रोल इज इन प्लेस देन वी टेस्ट कि वेदर इट इज ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट. डिजाइन के टाइम पे सिर्फ हम एक सैंपल की टेस्टिंग करते हैं, और जब हम ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस की करते हैं तब हम सैंपल्स लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी. फॉर एग्जांपल अगर कोई कंट्रोल है जो तुम्हारा एनुअली परफॉर्म होता है, मतलब साल में सिर्फ एक बार करते हो, तो उसका तो तुम एक ही सैंपल ले सकते हो, राइट. बट वही अगर कंट्रोल मंथली है तो तुम डिजाइन के टाइम एक सैंपल या दो सैंपल लोगे, लेकिन जब तुम यही कंट्रोल ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के पर्सपेक्टिव से परफॉर्म करोगे आईएफसी टेस्टिंग में, तो तुम उसके लिए यू विल गो बाय 3 or 4 सैंपल.
So that is the difference. Like in RCM, you basically design the control, and testing, you IFC testing, you basically test those controls. Now, at the last, I would say the last thing which you can also experience in risk advisory or internal audit domain is your special assignments. So, special assignment is very, I would say it's very impromptu kind of assignment which you might get during your articleship. For example, during my articleship experience in video, I got an opportunity to do an expense-based assignment. So where a client where a client demand was we have to scrutinize their expenses, because there was some intricate there was some complaints from their client that they are charging over and above the expenses which they should charge to them. So just to scrutinize those things, we were hired. So we have to perform those kind of assignments as well. So over and on all, these are the major, I would say, the areas where you can expect your exposure if you go and join internal audit or risk advisory department of any big 4, big 5, or big 10 firm. Moving on to your future growth prospects, I can leave it if you guys want to know further. I think I am done with my PPT. If you guys have any further questions, you can go ahead and ask me. If anyone have any question regarding the internal audit domain, please feel free to ask. Either I explained very badly or either I explained very good. You explained very well because your PPT covered almost every point. Okay, so I will ask you, Vidhi, like Mhm. as you're having an articleship experience for internal audit, now you are doing your industrial training in Barclays. So in Mhm. Barclays, what kind of role or work you are involved with? Okay. So basically, in Barclays, I am in SOX team. So SOX, as I mentioned in internal audit, also it's a part of it. So in internal audit, when I was in as an article, I only got one SOX assignment, and there I only did documentation. So if I have to explain in a layman, then documentation का मतलब था कि भाई एविडेंसेस आते थे, हम उनको देखते थे कि एट्रीब्यूट्स वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है कि इस डॉक्यूमेंट में आपका क्या कहते हैं ये हिस्ट्री होनी चाहिए, ये पॉलिसी होनी चाहिए, हम देखते थे और बस डॉक्यूमेंट कर देते थे। तो वो लर्निंग नहीं थी। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सॉक्स सर की, तो सॉक्स में बेसिकली हमें एफसी प्रोसेस, दैट इज द फाइनेंशियल कंट्रोल्स प्रोसेस। तो अगर तुम यूके का अगर सार्पिन्स ऑक्सली एक्ट पढ़ोगे ना, तो उसमें ये है कि जो भी कंट्रोल्स आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को इम्पैक्ट करते हैं, आपको उनकी टेस्टिंग करनी पड़ती है। दिस इज द बेसिक आई वुड से प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन सॉक्स टेस्टिंग। तो हमें क्या करना होता है, हमें पहले हम जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया कि डिजाइन इफेक्टिवनेस असेसमेंट होता है, हम यहाँ पे प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, देन वी टेस्ट देयर कंट्रोल्स, एंड देन अगेन यहाँ पे ओईटी साइकिल होती है। तो इट्स अ मोर और लेस सिमिलर टू माय अर्लियर रोल, बट मैं ये कहूँगी बहुत डिफरेंट है, क्योंकि मैं बैंक में काम कर रही हूँ। अभी तक मैं एक फर्म में काम करती थी जहाँ पे मेरा क्लाइंट होता था ऑडिट का। वहाँ पे तुम ये सोचो कि ऑडिट के लिए आपको कितने 2 महीने 3 महीने में आपको ऑडिट कंप्लीट करके देना होता है। यहाँ पे यही ऑडिट पूरे साल चलता है। तो तुम सोचो कि the level of in-depthness is very much in there. You are giving this entire year to that one process, for which you give only 2 to 3 months if you are working for a particular client. So the level of in-depthness, the level of deepness to understand the process is very much here. And plus, the what I feel the complexity is to understand the organization structure of an when you go and join any bank. I mean, that's the kind of thing which I am feeling, different from what I was used to do in BDO. Okay, so anyone else is having anything that you wish to know, or we will be also sending the LinkedIn IDs of each and every speaker present over there in today's session. So if you are feeling to connect with them over LinkedIn, so you can also connect and they'll be responding to your queries. Hi. Hi.
Actually, I have a question. Can I ask? Yeah, sure, Kajal, go ahead. What's the word that you mentioned that it should be in your CV or resume that it can, increase Okay, your chance? socks. If you have an experience in your articleship, socks, if you have worked in socks assignments, so it really increases the chance of getting more job opportunities from MNCs, because they really look for this kind of role if you have an experience in socks assignments. Yeah. Okay, so thank you so much, Vidhi, for sharing your precious time and coming here and sharing along with the PPT, all the knowledge regarding the internal audit domain. So thank you so much. And I hope it was very useful for each and every participant in the session. So thanks a lot, Vidhi. Thank you so much, Srishti and Varun. Thank you. Okay. So moving on towards our last and the most sought domain by many of you, as we have shared the Google form जिसमें आप लोगों को अपना domain preferences and all बताना था. So many of you, or what I would say most of you, mentioned statutory audit domain. So to tell you more about it, we are having CA Kunal Pissel. He is working in Ernest and Young EY, and he is having an experience of around 1 year in EY and an articleship experience of 3 years in PG Bhagwat. So over to you, Kunal, and welcome to the session. Hi guys, am I audible? Yes, you're audible. First of all, thank you SST and Varun for giving this opportunity to guide you young experience in this articleship journey here and afterwards. So first of all, I would like to tell something about me that I had did my articleship from PG Bhagwat, which is a mid-size firm from Pune, and after that Sorry I to have interrupt you, Kunal. Your voice is not clear, I think. just give me a second. Voice is very low. Is it right? Good now? Yes. Okay. I did my articleship from PG Bhagwat, Kolhapur, which is a firm based in Pune, but it is one of the mid-sized but good firm specializing in audit itself. So after completing my articleship, I joined EY because I got a opportunity with EY because I did my articleship from PG Bhagwat, because PG Bhagwat is one of the good firms. So going through the agenda, I will start with like what actually we do in audit and what it is. So as you have studied already in your intermediate or IPCC, whatever it is, that audit, what is audit is that basically हम audit पे ये करते कि हम assurance लाते कि जो financial statements हम बना रहे वो ठीक तरह से बने या नहीं, that individual figure जो हमारे financials में आ रहे वो ठीक से आ रहे या नहीं आ रहे, ये बेसिकली लॉजिकल कंसेप्ट है ऑडिट के पीछे. सो इसमें हम क्या करते हैं फिर बाद में काइंड ऑफ थोड़ा पार्ट आता है इंटर ऑडिट वाला जो होता है आईसीफआर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स. थोड़ा पार्ट आता है जो स्पेसिफिकली स्टैट ऑडिट के रिलेटेड होता है, वो होता है टीओडी जो हम एक्चुअली ऑडिट करते हैं कि एक्चुअली जो हर एक अकाउंट्स का जो हमारी जो इंडिविजुअली अकाउंट्स है जैसे कि फिक्स एसेट रहे तो फिक्स एसेट को ऑडिट कैसे करते हैं जो आपने ऑलरेडी सीखा होगा इंटर में कि लाइक ये स्पेसिफिक एरिया कैसे ऑडिट करते हैं. तो फिर हम वो सीखते हैं बाकी के जैसे डॉक्यूमेंटेशन रहता है कि जैसे ऑडिट रिपोर्ट रहता है कि ऑडिट रिपोर्ट में क्या रहता है, कारो रिपोर्टिंग या फिर आईसीएफआर का वो जो रहता है ऑडिट रिपोर्ट, या फिर कैश फ्लो रहते हैं या फिर फेस ऑफ द बैलेंस शीट पीएनएल रहता है, उसके बाद नोट्स एज पर शेड्यूल 3 ऑफ बग डिजाइन. ये जैसे छोटी छोटी चीजें रहते हैं हम वो जाके डिटेल में देखते हैं. तो फिर अगर आप एक कंपेयर करें एक बिग फोर और एक मिड साइज में क्या रहेगा कि आप मिड साइज में हमेशा आपको बिकॉज वहां पे क्लाइंट्स इतने बड़े नहीं रहते, मतलब ऐसे वो बहुत मल्टीपल करोर्स में नहीं रहते, छोटे क्लाइंट्स रहते तो मोस्टली आपको एक स्पेसिफिक क्लाइंट रहे तो उसके मोस्टली सारे एरियाज देखने को मिलते, मेजर एरियाज, बिकॉज वहाँ पे क्लाइंट छोटे रहते. लेकिन आप सिमिलरली बिग फोर्स ज्वाइन करो
तो आपको स्पेसिफिक एरिया दी जाती है कि लाइक एग्जांपल आप अगर नए आर्टिकल हो तो आपको कैश एंड बैंक एग्जांपल दिया जाए या फिर ओपेक्स दिया जाए, ताकि चेक कर आपको उतना मतलब क्रिटिकल ना हो कि एग्जांपल क्रिटिकल एरिया नहीं दी जाती इनिशियली। जैसे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते जाते हो कि लाइक मैं कर सकता हूँ, तो आपको वैसे ही बाद में बिग फोर में दिया जाता है। एंड कंपेरेटिवली मिड साइज में क्या रहता है कि मिड साइज आपको मेजर एरिया स्टार्टिंग से मिलने चालू होते हैं, क्योंकि वहां पर इतने बड़े क्लाइंट्स नहीं रहते और इतना बड़ा रिस्क नहीं रहता। ये रहता है काइंड ऑफ कंपैरिजन बिटवीन मिड साइज फर्म एंड बिग फोर। और उसके बाद जाए तो फ्यूचर अपॉर्चुनिटी क्या रहते हैं। तो अगर आपने आपको अगर ऐसे लगे कि स्टैचूरेट आपको मतलब लाइफ टाइम आप करना चाहते हो, तो ऑफ कोर्स ये है कि लाइक आप प्रमोट हो जा सकते हो कि आप ऊपर और ऊपर। जैसे जैसे इन माय केस इट वाज लाइक कि मैंने आर्टिकलशिप की थी पीजी भागवत से। सो आई गॉट अपॉर्चुनिटी फॉर विथ ईवाई टू वर्क विथ ईवाई की लाइक ओके ये और इस बंदे को ऑलरेडी पता है ऑडिट क्या रहता है, तो इसको हम ले सकते हैं। इट वाज काइंड ऑफ मोटिव बिहाइंड, यू कैन अंडरस्टैंड द मोटिव बिहाइंड द पर्सन वाज हायरिंग कि लाइक इसको पता है ऑडिट, तो ये हम ले सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी बिग फोर से आर्टिकलशिप कर रहे हो, तो आपको ऑलरेडी लाइक आपका वहां से वो ऑलरेडी खुद एक्सेप्ट कर देते हैं आपको वहां पे कि आपके चांसेस हाई है वहां पे हायर होने के। और ऑफ कोर्स अगर अगर आप दूसरे एरिया में जाना चाहते हो, तो आपके पास ऑलरेडी एक बिग फोर का टैग है। और अगर आप वहां पर ही रहना चाहते हो, तो वो भी है कि आप जल्दी जल्दी प्रमोट हो सकते हो ऊपर लेवल्स पे। अगर आप ये फील्ड छोड़ के बाहर जाना चाहते हो, क्योंकि ऑडिट ऐसे एक नीश फील्ड नहीं है कि ऐसा नहीं कि आप ऑडिट करें तो आप लाइफ टाइम ऑडिट ही करना पड़ेगा। सबसे इजी है कि आप जनरल मैनेजमेंट में जा सकते हो, जैसे कि आप फाइनेंस कंट्रोलर बन सकते हो किसी कंपनी के, और कुछ भी बाकी भी कर सकते हो। तो ऐसे इतना नीश नहीं, क्योंकि आपको हर फाइनेंशियल्स के हर एक चीजों पे कंट्रोल रहता है हमेशा ओवर द पीरियड की लाइक 3 साल में कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। आपको पता है फाइनेंशियल्स कैसे रन होते हैं, आपको फाइनेंशियल्स पढ़ना आता है कि आपको स्पेसिफिक एरिया स्पेसिफिकली अकाउंट्स के बारे में ज्यादा जानकारी होती है, तो आप मोस्टली कुछ दूसरे फील्ड्स में जाना इजीली रेदर देन बाकी के नीश फील्ड है उससे यहाँ पे बहुत ईजी है। मेरा भी मोटिव यही था कि जब मैंने आर्टिकलशिप ज्वाइन की थी विद पीजी भागवत, कि मैं भी सोच रहा था कि क्या ज्वाइन कर सकता हूँ। तो फिर मेरे जिन लोगों ने मुझे गाइडेंस दिया, उनका यही था कि अगर तूने स्टेट आउट किया तो मोस्टली तू बाकी के एरिया में बाद में जा सकता है। माई मोटिव वॉज बिहाइंड ज्वाइनिंग आर्टिकलशिप विद पीजी भागवत। सो उसके बाद स्टडीज के बारे में बोलूँ तो स्टडीज में अगर आपने स्टेट आउट अगर चूज किया, तो आपको स्पेसिफिकली वो मदद करेगा स्पेसिफिकली ऑडिट सब्जेक्ट और एफआर। ये दोनों सब्जेक्ट को आपको एक्चुअली में प्रैक्टिकल में देखने मिलता है। बाकी के ऐसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट में कुछ नहीं होता, लेकिन स्पेसिफिकली एफआर और ऑडिट के बारे में आपको बहुत ज्यादा पता चलता है इन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, जो आपको स्टडीज में भी हेल्प करता है। लेकिन जो एक्चुअल ऑडिट है आपका स्टडीज वाला, वो एक्चुअल प्रैक्टिकल में वैसे नहीं होता। आपको प्रैक्टिकल में बहुत डिफरेंस मिल सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आपको मतलब इन स्टडीज इट इज काइंड ऑफ रटिफिकेशन ऑफ ऑडिट, बट इन प्रैक्टिकलिटी वो ऐसा नहीं है। सो वो अलग है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऑडिट स्टैट्यूटरी कर रहे हो तो आपको स्टडीज में भी वो मतलब ऑफ कोर्स हेल्प होती है, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि लाइक इजीली हो जाएगा स्पेसिफिकली अबाउट स्टडीज। एंड स्पेसिफिक स्पीकिंग अबाउट इंटरव्यू एक्सपीरियंस, आपको स्पेसिफिकली प्रिपरेशन करनी पड़ेगी स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स इन द मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो इंड से स्पेसिफिकली। और बाकी की लाइक ऑडिट का जो ये रहता है कि लाइक काइंड ऑफ कि ये एरिया स्पेसिफिक कैसे ऑडिट करे या फिर ये एरिया कैसे स्पेसिफिकली ऑडिट करे, वो जानकारी रहे तो आपको इजीली इंटरव्यू क्रैक करना। स्पेसिफिकली टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी नए हो इस फील्ड में। तो फिर आपको सिर्फ टेक्निकल जो नॉलेज है कि लाइक स्पेसिफिकली एरिया कैसे ऑडिट करने, वो रहे तो आपको इजी जाएगा इंटरव्यू स्पेसिफिकली। और रिगार्डिंग ये इसके बारे में ज्यादा मुझे लगता है वरुण और सृष्टि करेंगे बता सकेंगे, क्योंकि वो लेटेस्टली अभी उन्होंने इंटरव्यू देके बिग फोर और सृष्टि ने वीडियो ज्वाइन किया है स्पेसिफिकली। और इतना ही था। इफ एनी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। Hello, Kunal. हाँ। So I wanted to ask that I have heard from many people that if you go into statutory audit, you generally learn the almost all the things in 1 year, and after that it becomes like monotonous after that. So what are your thoughts on this?
आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होता है, क्योंकि मैंने आर्टिकलशिप पीजी भागवत में की है, उसके बाद भी मैंने ईवाई में स्टैट्यूटरी कर रहा हूँ। लेकिन हर साल ऐसा कुछ ना कुछ तो नया निकलता ही है कि लाइक वो मोनोटोनस नहीं बन जाता। क्योंकि ऑडिट में स्पेसिफिकली क्या रहता है कि एक क्लाइंट कम से कम 3-4 महीने तो चलता ही है, अगर बड़ा क्लाइंट हो। तो फिर वो उतना पीरियड हर एक क्लाइंट को चार, मतलब अगर तूने 4 साल में आपने जब चार एक सॉरी एक साल में 4 ऑडिट किए, तो वो मोनोटोनस नहीं बता, क्योंकि हर एक जैसे ऑफ कोर्स वो मोनोटोनस कब बन जाता है कि अगर तुम रिपीटेटिव सेम क्लाइंट कर रहे हो कि हर साल वही करो, तीन ऑफ कोर्स तीसरे साल वो मोनोटोनस बन ही जाएगा। लेकिन अगर आपके पास अलग अलग फील्ड से ऑडिट है, जैसे कि अगर तूने आपने फर्स्ट ऑडिट ऑटोमोटिव का किया और नेक्स्ट ऑडिट फार्मेसी का किया, तो ऑफकोर्स वो मोनोटोनस नहीं होता। और इसमें क्या रहता है कि आपको वो सबसे मतलब अच्छी चीज ऑडिट की ये है कि आपको वो बिजनेस है ना, स्पेसिफिकली अगर आपने टाटा का ऑडिट किया तो आपको किसी भी मतलब ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का इंफॉर्मेशन आपको अंडरस्टैंडिंग पक्का मिल जाती है कि लाइक ओके कि ऑटोमोटिव में क्या हो रहा है, कि इनका मेन बिजनेस क्या है, कि इनकी गाड़ियां क्या चल रही है। और मोस्टली इंडस्ट्री से पहले आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि ओके कि टाटा के एग्जांपल ओके ईवी आने वाले, ये मोस्टली लोगों को पहले ऑडिटर को पहले पता होता है, क्योंकि वो इंटरनली उसको मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो फिर वो अंडरस्टैंडिंग में अच्छा रहता है। काइंड ऑफ मोनोटोनस कब बन जाता है कि लाइक अगर आप सेम ही एरिया और सेम ही फील्ड में हमेशा काम कर रहे हो, तो फिर ऐसा भी हो कि आप ऑफ कोर्स आपके जो सीनियर्स है वो आपको, अगर आप उनसे बात करो कि मोनोटोनस हो रहा है, तो फिर ऑफ कोर्स वो आपको अलग एरिया देंगे, आप अलग अपॉर्चुनिटी देंगे। ऐसे मोनोटोनस हो जा सकता है, लेकिन अगर वो सिमिलर क्लाइंट हो तो तभी, नॉट क्या हमेशा हो जाता है। Thank you, Kunal. यस, जंकार, यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक। हाय कुणाल भैया, आई वांटेड टू नो कि स्टैट ऑडिट के लिए कहाँ से इंटरव्यू प्रिपेयर कर सकते हैं, लाइक टेक्निकल क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं, इस बारे में थोड़ा नहीं पता था। और टेक्निकल क्वेश्चन स्पेसिफिकली आपको इंटरनेट पे कहीं भी मिल सकते हैं, कि लाइक कहाँ पर आप सर्च करोगे पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे कि कॉमन क्वेश्चन क्या रहते हैं। लिंक्डइन पे वो मोस्टली सब लोग ऐसे शेयर कर देते हैं। लेकिन अगर टेक्निकली तुझे स्ट्रांग होना है आपको, तो आप एएस और ऐसे दोनों अगर स्ट्रांग किए और कैसे चीजें ऑडिट करते हैं, कि जैसे स्पेसिफिक एरियाज के लिए, और एक कोई भी फाइनेंशियल गो थ्रू करो, तो आपको टेक्निकली मतलब आ जा सकता है कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं क्या करना है, क्या नहीं करना। इसमें मैं भी दो तीन चीजें ऐड कर देता हूँ इंटरव्यू स्पेसिफिक, जो मेरे से भी पूछे गए थे। तो एक अपना स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गया, और एक अपना चैप्टर का यानी जैसे वही ऑडिट ऑन आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड दूसरा जो कारों के अमेंडमेंट्स होते हैं, ये क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछे जाते हैं। एंड शेड्यूल 3 के अमेंडमेंट्स एंड कारो 3 के अमेंडमेंट, जो शेड्यूल 3 का फॉर्मेट है एक बार वो भी देख लेना। शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट पीएनएल कैसे बनता है, और पर्टिकुलर उसमें कुछ कुछ अमेंडमेंट्स आई अभी, तो वो आइटम कहाँ क्लासीफाई होते हैं, क्लासिफिकेशन के अमेंडमेंट्स होते हैं। तो ये दो तीन चीजें। एंड दूसरा तो मोस्टली यही करते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर आपको बोलेंगे कि मेरा सेल्स का ट्रांजेक्शन है, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा कि ये सेल एक्चुअली ऑकर हुआ है कि नहीं। तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो सही में हुआ है कि नहीं, ऐसे वो पर्टिकुलर एरिया एक आपको एक केस स्टडी देंगे समझो छोटा सा, एंड बोलेंगे इसमें कि आप बताओ कि क्या करोगे आप फाइंड करने के लिए। तो मोस्टली ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, एंड जर्नल एंट्रीज वगैरह भी पूछेंगे आपके आंसर्स के बेसिस पे। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड हियर वन थिंग, एज वरुण मेंशन कि जितने भी क्वेश्चंस है वो मोस्टली केस स्टडी बेस्ड। तो इन बिग फोर एंड बिग सिक्स इंटरव्यूज इन स्टैट्यूटरी ऑडिट, मोस्टली द क्वेश्चंस विल बी इन द केस स्टडी फॉर्मेट। एंड चैप्टर 9 of your audit, CA intermediate audit, that is audit of items of financial statement, ये एक चैप्टर आपका बहुत अच्छे से करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि at my time of giving the interviews, I have also did this chapter, and this chapter has helped a lot for cracking the interview. So this is the most important chapter that you will have to see before going for interview. Yes, if anyone is having any other question, I think Kunal, just take a look at the chat box. We are having few of the questions. Regarding referring to for articleship in EY or KPMG from Himangi, I would like you can share me your resume in with on my LinkedIn or through Varun. You can share. We will be more happy to refer you there. Uh, and We will regarding share the LinkedIn IDs of everyone, and you can ask them for help.
Regarding making a shift from taxation domain to stat audit, I think if you have good knowledge of stat audit, it is very easy to shift in stat audit, and also vice versa. But it is regarding you, if you have to prove kind of that why you're shifting from this to that. It is not like you can't blame the another domain regarding why you are shifting. Of course, if you are trying to gain knowledge over the time, then you can. It is kind of easier to shift from one domain to another domain. Regarding how many articles do Big Four or Big Six hires, I don't think I have the specific figure for it, but it depends varies upon the requirements of number of hires. But mostly Big Fours don't hire on a large scale, but mid-sized firms hire on a large scale. Regarding workload and late night sitting at Big Fours, of course, during busy periods, it is higher. That of course, workload is higher. But other than that, during November, December, or Jan period, that workload is not that much higher. But mostly in Big Fours, workload is higher compared to big another mid-size or any big other firms. If any Anyone another is question. having any other questions? Any other question? I think regarding time for study, I think Varun will kind of explain me more because I'm not right now studying in it because I did my articleship from PG Bhagwat. I think I had enough time to study, but I think Varun will explain this question in better way. So it completely depends on you. So if you can wake up early and study in the morning, you can study for 1 or 2 hours in the morning and then go to office. And after coming from the office, you can study for 1 or 2 hours. So if you even if you study 3 to 4 hours regularly from the beginning, then you won't be facing any issues. But you have to continue studying for at least 2 to 3 hours daily, and you can take out that much time, even though there is high workload in this course. But except 1 or 2 months, you can take out time for study. And And I will ask also, one general, yeah, continue. yes, you can go forward. Uh, One general question that many articles said that they should do articleship in a firm where they get all domain exposure, or they should go for a particular domain only. So what's the take, Kunal? I think it depends upon your interest because as people who guided me kind of it was like मतलब easy था कि ऐसे कि like अगर तू sure नहीं है कि क्या करना चाहता है तो स्टैट्यूटरी ऑडिट इज बेस्ट ऑप्शन बिकॉज वहां से कहीं पे भी शिफ्ट हो सकते हैं लेकिन अगर कोई नीश फील्ड गया और आपको पसंद नहीं है तो वहां से शिफ्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है एग्जाम्पल अगर मैंने टैक्स ले लिया और बाद में ऐसे लगा कि अरे मैं टैक्स नहीं करना चाहता तो फिर ऑफ कोर्स दूसरे कोई भी डोमेन में जाने के लिए आपको थोड़ी बहुत तकलीफ होगी क्योंकि आपके बाकी के डोमेन में कुछ भी नॉलेज नहीं है आपको वैसे स्टैट्यूट में आपको बाकी की चीजों का नॉलेज रहता है कि जैसे अगर आप स्टैट्यूट में अगर टैक्स के बारे में भी देख सकते हो कि लाइक ओके कि इस कंपनी का टैक्स कैसे मूव हो रहा है कि टैक्स कंपटीशन कैसे हो रहा है एग्जाम्पल के लिए जैसे जीएसटी भी देख लेते हैं हम कि ओके जीएसटी में इनके क्या मूवमेंट हो रहे हैं लेकिन ऑफ कोर्स आपको स्टैट्यूट में ऐसे नीश फील्ड जैसे कि इंटरनेशनल टैक्स रहे या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रहे इस फील्ड्स के बारे में नहीं पता चलेगा लेकिन ये स्टैट ऑडिट इजी डिसीजन है क्योंकि मोस्टली आपको सारे एरियाज का नॉलेज मिल जाता है If not, then okay. What are the resources we can use to stay updated related to amendments and business updates? Yeah, and you can also follow some finance or business apps like Money Control and all. And for amendments regarding Schedule 3 and Carol, you can directly search on them. You will find the amendment. And one thing I would like to say, means whichever firm you want to join, first research about it.
because many times there are some small firms which put restriction on you that you have to continue. They take an agreement from you that you have to continue for 3 years. So avoid joining that firm, because if you are not getting interested in that domain, then you will be either wasting all your articles stipend that you have received, because they take the stipend back, or they won't be giving you transfer only. So you will be facing a lot of issues in that case. So research about that firm. Even if you are joining a mid-size firm or a big four firm, talk to the articles who are already doing articleship there. What's their experience? So that's very crucial. Many articles join seeing the stipend amount. Means in nowadays many mid-sized firms are also offering 15K, 16K stipend in the first year. But don't go for the stipend. First, talk about the work experience there, and what are their workload, what are the other opportunities they are getting to learn there. These things are important than the stipend. So look for these things and ask that. Don't ask only one article. Ask 2, 3 articles. Connect to them on LinkedIn and ask about their experience there. And uh, for resume preparation, we would be sharing one demo resume which you can uh, refer. And anything more you want to ask, you can ask. And I would like to add one thing to it, as I have 11 months experience of statutory audit in video. I'm working in video, and someone has asked there before a question regarding what interview questions are asked in video. So apart from SA and AS, as Varun has already mentioned, like case study based questions and every other kind of thing, and even they ask you personality related questions, like they will be placing before you some of the situations कि अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशंस आती है, लाइक आपके टीम रिलेटेड कोई सिचुएशन है, सो क्या काइंड ऑफ मतलब आपका उसमें लुक, मतलब आप कैसे रिएक्ट करोगे. सो मोर ऑफ अ टेक्निकल प्लस अ पर्सनालिटी बेस्ड इंटरव्यूज मोस्टली होता है. मैंने भी मेरे आर्टिकलशिप के टाइम पे आई अप्लाइड फॉर 2 फॉर्म्स, EY and BDO, and then I joined BDO. So even in the EY interview, I was asked regarding technical question plus my personality development question, or a question on my morals, like if I am in a team, then how my values should be, or how I could connect with everyone and coordinate with it. So in the interview, I would like to say you all that कि just focus कि जो सामने वाला व्यक्ति है, इंटरव्यूअर है, कि वो किस तरह से, किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, एंड विदाउट लूजिंग योर कॉन्फिडेंस यू हैव टू आंसर ऑल दैट क्वेश्चन बिटफुली. अगर वो आपको, जैसे स्ट्रेंथ और वीकनेस वाला ये क्वेश्चन होता है, जिसमें स्ट्रेंथ्स तो हम सब बता देते हैं बराबर से, बट जब बात आती है वीकनेस की, सो हम ऐसा नहीं है कुछ भी हमारे बारे में लो पॉइंट वहाँ पे जाके स्टेट कर सकते हैं. जो वीकनेस भी है उसको भी आपको पॉजिटिवली टर्न आउट करके वहाँ पे इंटरव्यू के प्रेजेंट करना पड़ेगा, कि लाइक उनको ऐसा भी ना लगे कि अरे ये इसका वीक पॉइंट है, बट ही शुड नो दैट कि ये इसकी वीकनेस है, बट ये वीकनेस कहीं ना कहीं इसकी स्ट्रेंथ में ही हेल्प कर रही है. सो ये एक स्ट्रेंथ और वीकनेस वाला बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है. सो जो वीकनेस है उसको भी आपको इस तरह से प्रेजेंट करना पड़ेगा कि वो मेरी स्ट्रेंथ कैसे बन सकती है. एंड टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट इन वीडियो, सो जितना भी है, ऐसे आई थिंक काव्य ने पूछा था कि ही हैव हर्ड फ्रॉम द सीनियर्स कि 1 साल में सब कुछ सीखने मिलता है, बट ट्रस्ट मी काव्य, 6 मंथ्स आपको सिर्फ वाउचिंग करने मिलेगी एंड बेसिक वर्क पेपर्स, like you will be doing TOD TOC testing only, and the basic work papers and walk through basic जो भी होता है, जो ग्राउंड लेवल होता है, आप फर्स्ट ईयर तक मोस्टली वही करोगे. अभी मैं मेरे फर्स्ट ईयर के एंड पे हूँ, तब मुझे जाके मतलब कोर एरिया, क्रीम एरियाज, जैसे कि PPE हो गया, या तो रेवेन्यू हो गया है, या वॉक थ्रूज ऑफ O2C, ये सारी चीज़ें मुझे अभी मिलने लगी है व्हेन आई एम टुवर्ड्स माई एंड. एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट इतना बड़ा है कि 1 साल क्या, इवन 3 इयर्स ऑफ आर्टिकलशिप में भी आप करोगे, सो बहुत सा ऐसा आपका पार्ट छूटेगा जो आपको एक्सपीरियंस करने नहीं मिलेगा. लाइक बिग 6 फर्म्स में इन्वेंट्री, कॉग्स एंड रेवेन्यू इन मोस्ट ऑफ द फर्म्स, एंड टैक्स, ये 4 एरियाज है जो आर्टिकल्स को कभी वर्क करने जिस पे नहीं मिलता है, अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ही एक्सेप्शनल हो, आपका एकदम ब्रिलियंट माइंड है और आप खुद से एंथुजियाज्म दिखा रहे हो और वो आप उस चीज़ को करने में आपकी कैपेबिलिटी है, तभी आपको जाके ये कोर एंड क्रूशियल एरियाज मिलेंगे. एंड टैक्स तो आई डोंट थिंक कि कोई आर्टिकल को मिलता है.
सो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके 3 साल के आर्टिकलशिप में यू हैव कवर्ड एवरीथिंग ऑफ स्टार्ट ऑडिट, बट जो भी इम्पोर्टेंट या मोस्ट यू कैन से बेसिक्स आपका कवर हो जाता है फर्स्ट ईयर में। देन जो आपका पीरियड होता है सेकेंड एंड थर्ड ईयर का, तो जो भी कोर एंड क्रीम एरियाज हो सकते हैं आपको वो सब मिलता है। एंड इवन यू कुड गेट हियर द अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली ऑन अ क्लाइंट और हैंडलिंग मोर एरियाज। इफ अगर कोई एलएलपी हो या कोई छोटी कंपनी हो, सो आपको ये भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि आप ऑलमोस्ट एरियाज उस क्लाइंट के इंडिपेंडेंटली हैंडल करो। सो स्टार्ट ऑडिट इज ऑल इन ऑल अ वेरी वास्ट डोमेन, एंड yes, at some point of time you will think कि वर्क थोड़ा रिपीटेटिव हो रहा है, थोड़ा मोनोटोनस हो रहा है, बट उसमें आपको अपना माइंड यूज करना पड़ेगा, डेटा एनालिसिस करके आपको ही अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, सीनियर्स से पूछना पड़ेगा कि और क्या आप इसमें एक्स्ट्रा कर सकते हैं, और क्या न्यू टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं इस एरिया को एनालाइज करने के लिए। सो that's what. Over to Kunal and Varun if you want to add something. Thank you, Yeah, Srishti, for addressing my query. That was really nice of you. एंड सर ये स्टैट ऑडिट के रिलेटेड ही कोई भी एरिया अगर कोई भी डोमेन चूज करते हो तो ऐसा नहीं है कि एक साल में कोई भी डोमेन के बारे में आप पूरा सीख लोगे। 3 साल कोई भी चीज सीखने के लिए बहुत कम है, क्योंकि हर एक फील्ड इतना वास्ट होता है, डेली उसमें कुछ ना कुछ नए नए चेंजेस आते रहेंगे। अब मैंने भी आज तक कभी रेवेन्यू कॉस्ट इन्वेंट्री ये सब एरियाज नहीं किया है, और मैं भी हर एक बार अलग अलग क्लाइंट से प्लॉट होता हूँ, फिर एरियाज भी अलग अलग मिलते हैं। तो रिपीटेटिव ऐसे हो सकता है कि हाँ 2-3 एरियाज जो है आपको हमेशा रिपीटेटिव लगेगी, क्योंकि वो मोस्टली इंटर्नशिप मिलते हैं, जैसे कैश एंड बैंक हो गया, अदर एक्सपेंसेस हो गया, तो ये 2 एरियाज रिपीटेटिव आपके लिए रहेंगे। बट आपको आप सीनियर्स को अगर आप बोलोगे तो आपको नए नए एरियाज मिलते रहेंगे। एंड दूसरा होता है कि एक वर्कलोड का भी जो बिग फोर एंड बिग सिक्स में ऐसा रहता है कि ज्यादा है। ये है ना हर एक टीम पे डिपेंड करता है। जैसे अभी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी अभिषेक ने बोला कि मेरी टीम थोड़ी एक्सपेंसिव रेट है, ये वर्किंग आवर्स से related। तो ये हर एक टीम के ऊपर डिपेंड करता है कि उनके वर्किंग आवर्स कैसे हैं। कोई कोई अभी वर्क फ्रॉम होम भी अलाउ करते हैं, बिग फोर में वर्क फ्रॉम होम अलाउ करते हैं। यानी वो पर्टिकुलर टीम पे डिपेंड करता है, जो भी है पूरा आपका वर्कलोड है, आपकी अपॉर्चुनिटी है सीखने की, वो सब आपकी टीम कैसी है, आपके सीनियर्स कैसे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। एंड एक ये टाइम था कि कितना टाइम लगता है आप अगर एक बार रेफर हो गए तो वहाँ से रिस्पॉन्स आने के लिए। तो ये डिपेंड करता है कि एटलीस्ट आप 15 दिन तो पकड़ लो कि सिर्फ वो 15 से 20 दिन, अभी रिजल्ट अभी आ गए हैं, तो अभी 15 से 15 एक दिन में आपके रेज्यूमे सॉर्ट होंगे, एंड अकॉर्डिंग टू उनके रिक्वायरमेंट जो है वो फिर कॉल करना चालू करेगी। उसके बाद फिर इंटरव्यू प्रोसेस जब होगा, अगर ऑफलाइन हो रहा है तो फिर आपका 2-3 दिन में प्रोसेस खत्म हो सकता है, बट अगर ऑनलाइन हो रहा है तो ऑनलाइन में मे बी वो 10-15 दिन भी चलता है। जैसे मेरा इंटरव्यू, तो एक इंटरव्यू जो हुआ था उसके 15 दिन बाद मेरा सेकेंड इंटरव्यू वो रखा गया था, एंड उसके बाद फिर मैंने ज्वाइन किया था। तो प्रोसेस लंबा होता है, बट आप कभी भी एक फॉर्म में अप्लाई करके उसके भरोसे मत बैठ जाना। कम से कम 4-5 फॉर्म्स में अप्लाई करना, कुछ मिड साइज में भी करना, बिग फोर में भी करना, बिग सिक्स में भी करना, हर जगह अप्लाई करके रखना। फिर आपके पास क्योंकि रहेगा कोई ऑप्शन कि अगर वहां से रिप्लाई नहीं आता है तो मैं ये फॉर्म ज्वाइन कर लूँ। अगर आप एक के भरोसे बैठे रहेंगे और उसका रिप्लाई नहीं आया तो फिर लेट आखिरी आखिरी में ना, जब डेडलाइन होता है, जैसे क्या होता है मेरे 4 या 5 महीने का कितना रहता है, उतना टाइम रहता है अपने पास। मेरे यहाँ 30 5 महीने का अक्टूबर रहता है कि रहेगा। हाँ अभी मेरा अटेम्प्ट था ना, हाँ तो अभी 31 अक्टूबर ही रहेगा। तो आखिरी आखिरी में जब डेडलाइन आती है ना, तब फिर बहुत इश्यूज आता है कोई भी फॉर्म ढूंढने में। एंड फिर हम कोई भी जो मिली फॉर्म ज्वाइन कर लेते हैं, फिर हम सोचते हैं बाद में ट्रांसफर लेंगे। तो ट्रांसफर अगर हम बिग फोर से मिड साइज कर रहे हैं तो बहुत ईजी होता है, बट अगर आप मिड साइज से बिग फोर जाना चाहो ना तो बहुत दिक्कत जाती है ट्रांसफर लेने में। तो और अगर आपको कोई भी यानी वो है कि फिक्स नहीं है आपका डोमेन की मैंने कौन सा लेना चाहिए, तो जैसे अपन जब 11th-12th में सोचते हैं कि कोई अगर समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, तो लोग साइंस ले लेते हैं। भाई साइंस ले लिया तो उसके बाद कहीं भी जा सकते हैं। तो वैसे ही स्टेट्यूटरी ऑडिट है, एक बार आपने स्टेट्यूटरी ऑडिट ले लिया तो यहाँ से आप कोई भी फील्ड में जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक फील्ड का थोड़ा बेसिक बेसिक आइडिया तो मिलेगी। जैसे इधर भी आपको डीटी और आईडीटी के बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया तो मिलेगी, इतना वास्ट नहीं जितना आप उधर पर्टिकुलर जाके सीखोगे, बट एक बेसिक आइडिया मिलेगा। तो स्टेट ऑडिट से जाना दूसरे फील्ड में बहुत ईजी है एज कम्पेयर टू दूसरों से इधर आना। यानी आफ्टर क्वालिफाइंग तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपको जो मन करे, बट इजी जाता है स्टेट ऑडिट से दूसरे फील्ड में जाना। एंड आपके पास इसका भी अपॉर्चुनिटी रहता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे जाने का। और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वाले जो बड़ी फॉर्म्स रहती है, मोस्टली वो क्या प्रेफर करती है कि बिग फोर या बिग सिक्स के आर्टिकल्स हो, या तो उनका रैंक हो ये
इंटर वगैरह। तो इसलिए बिग फोर और बिग सिक्स में ज्वाइन करना भी वो भी एक पॉजिटिव रहता है पॉइंट, अगर आपको फ्यूचर में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वगैरह में जाना है तो। एंड द दूसरा And क्वेश्चन था one more thing I would like हाँ to add here what Varun said. ज़रूरी नहीं है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स में जो भी आपका मतलब हो, या इट इज़ ट्रुथ कि वो बिग फोर बिग सिक्स आर्टिकल प्रेफर करते हैं या रैंकर्स प्रेफर करते हैं, बट अगर आपने अपने इंटरव्यू में एक्सेप्शनल स्किल्स दिखाई और अगर आपने अपने इंटरव्यू में बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, सो देर इज ऑल्सो रूम फॉर यू टू जॉइन देयर इन बिग कंपनीज फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। सो अगर आपको इन केस बिग फोर या बिग सिक्स में इंडस्ट्रियल आर्टिकलशिप नहीं मिलती है या आपका रैंक नहीं है, सो देर इज नो वे कि आप डिसहार्टन हो जाओ कि अगर आपके बकेट लिस्ट में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है तो आप नहीं, मुझे नहीं मिला है बिग सिक्स में आर्टिकलशिप में, नहीं जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगा। ऐसा नहीं है। अगर आपने आपके इंटरव्यू में बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, सो देर इज ऑल्सो अ चांस एंड रूम टू ज्वाइन देयर। एंड किसी ने चैट बॉक्स में ट्रैवलिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। सो ट्रैवलिंग रिलेटेड पार्ट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर फर्म। अगर आपके पास आउट स्टेशन क्लाइंट्स है, या अब जैसे मैं पुणे में हूँ, सो हमारे पास मोस्टली जो क्लाइंट्स है वो पुणे के आसपास जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज है, लाइक चाकन, खेड़, पिरंगुट, ये सारे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं। सो हमारा वैसे ही होता है, लाइक 2 hours का ट्रैवलिंग होता है। क्लाइंट प्लेस तो जाना है, लाइक कोई भी हम ऑडिट कर रहे हैं, सो क्लाइंट विजिट्स तो हमारी रहेगी। अगर सपोज एक ऑडिट कर रहे हैं एंड फॉर एग्जांपल ऑडिट कंप्लीट करना है आपको विद इन 20 days, सो मिनिमम टू मिनिमम 5 to 6 days आपको ऑडिट क्लाइंट प्लेस पे रहना ही पड़ेगा। सो आउट स्टेशन क्लाइंट्स वगैरह ये सब आपको फर्म पे डिपेंड करेगा। एंड अगर आप वहाँ सिलेक्ट होते हो, सो यू कुड इंक्वायर देयर एंड यू कुड नो फर्दर अबाउट ट्रैवलिंग एंड एवरीथिंग एल्स। एंड और जो स्टैट्यूटरी ऑडिट का इंटरव्यू रिलेटेड आप लोग पूछ रहे हो कि इंटरव्यू के लिए रिसोर्सेज जो क्वेश्चंस एंड ऑल है, सो आई हैव माय कलीग वर्किंग इन वीडियो, मिहिर खांडेलवाल। उसने अपने ग्रुप पे भी उसकी लिंक्डइन पोस्ट शेयर की है। आप उसकी लिंक्डइन पोस्ट पे जा सकते हो एंड इवन आई कुड शेयर हिज लिंक्डइन पोस्ट, जहाँ पे उसने एक 70 to 80 पेजेस का कंप्लीट मैनुअल खुद से बनाया है, जो बिग फोर और बिग सिक्स के स्टैट्यूटरी ऑडिट इंटरव्यू प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। So I will share that with you all. You could refer. It is very comprehensive और ये बिल्कुल recent और updated सारे questions पे बनी हुई है। अमित का क्वेश्चन है, डू अटेम्प्ट्स मैटर इन बिग फोर? तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके मल्टीपल अटेम्प्ट है तो आपको लेंगे ही नहीं, बट एक नॉर्मल बात है कि अगर कोई अगर सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है तो वो उनको प्रेफर करेंगे जिनको हायर मार्क्स है, जिनका इंटरव्यू अच्छा गया है। एक ऐसा नहीं कि आपका इंटरव्यू ही शेड्यूल नहीं होगा, आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपके इंटरव्यू में वो चेक करेंगे आपका नॉलेज कैसा है। एंड अगर आपके रेज्यूमे में कुछ ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स है, जैसे आपने कभी कोई स्टेट में कोई स्पोर्ट्स में आप स्टेट में खेलो या कोई भी ऐसे कंपटीशन है जहाँ आप हायर लेवल पे गए हो, तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये भी आपके रेज्यूमे को बहुत हाईली अफेक्ट करते हैं, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाते हैं। क्योंकि एज अ स्पोर्ट्समैन आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, या आप कोई कॉम्पिटिशन में भी पार्टिसिपेट किए हो ऐसे हायर लेवल पे, तो एडिशनल पॉइंट होता है आपके इससे। एंड निखिल का जो आपका क्वेश्चन है, तो आप अभी से यहाँ शिफ्ट मत हो, बट आप एक बार फॉर्म्स के लिए अप्लाई करो, एंड उनके इंटरव्यूज आपको मोस्टली, अगर आप मिड साइज फॉर्म के लिए जा रहे हो तो वो ऑफलाइन इंटरव्यूज ही प्रेफर करते हैं। और अभी जैसे कोविड सब बंद हो गया तो बिग फोर भी वापस अपने ऑफलाइन इंटरव्यूज पे शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। बट अगर वो ऑनलाइन लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है, आप उनको बोल सकते हैं कि मेरा पॉसिबल नहीं होगा ना, तो आप ऑनलाइन इंटरव्यू लीजिए। अगर वो बोलते हैं ऑफलाइन ही, तो आप फिर आके एक बार ऑफलाइन इंटरव्यू यहाँ पे देके जाइए, एंड शिफ्ट बाद में होना जब आपको मिल जाता है ऑफर लेटर वगैरह। बाकी इंटरव्यू देने के लिए हो सकता है आपको आना पड़े। और कोई क्वेश्चन है किसी के? तो एंड करें सेशन। और कोई अगर आपके डाउट्स होते हैं तो मैं सबके आपको लिंक्डइन के लिंक शेयर कर दूंगा, जो भी हमारे स्पीकर्स थे, आप उनको पर्सनली जाके मैसेज कर सकते हैं। आपके जो भी डोमेन रिलेटेड डाउट्स रहेंगे, या आप ग्रुप पे भी कुछ भी मैसेज कर सकते हैं। Varun, I have one more doubt. हाँ जी। Since हाँ we are applying for articleship now and we are targeting Thank you like so much, top Kunal, 10 for firms. sharing your time on this Sunday evening and enlightening us with what exactly statutory audit is. And as Varun said, we'll be sharing the LinkedIn IDs of all the हाँ speakers in the group. So feel free to connect with them and ask your questions. वी विल फर्स्ट। हाँ हाँ, यस, कंटिन्यू। Okay.
सो जैसे अभी हमने आई एम आर्टिकलशिप डन. के लिए If you अप्लाई have to करना add स्टार्ट anything, कर you can दिया। add, or सृष्टि else we could सृष्टि end up. 1 minute, सृष्टि 1 minute, Saga is asking one question, हाँ, 1 minute. सो Yes. जैसे अभी हमने आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है, लाइक टॉप टॉप 10 और टॉप 15 फर्म्स में। तो व्हाट इफ अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है किसी एक अपर मिड साइज फर्म में, एंड देन वी आल्सो गेट एन ऑफर लेटर फ्रॉम अ बिग फोर, तो क्या वो हमें शिफ्ट अलाउ करेंगे जो अपर मिड साइज फर्म है इनिशियल एकदम? तो अगर आपको कोई भी एक फर्म से ऑफर लेटर आता है, एक मेरा भी फ्रेंड थे, उनके साथ ऐसा हुआ था, तो मैंने उनको बोला था कि इमीडिएटली ज्वाइन मत करो, उनसे जितना आप टाइम मांग सकते हो कि मुझे उनसे उनको ऐसा बोल दीजिए कि मुझे हफ्ता भर चाहिए रहेगा, मैं थोड़ा हफ्ता भर डिसाइड करता हूँ, फिर आपको मैं नेक्स्ट वीक तक बताता हूँ। यानी आपको जो एक्सपेक्टेड है कि आपको रिप्लाई आने वाला है दूसरे फॉर्म से, तो आप उनको बोलिए कि इतना टाइम मुझे दीजिए। वो नहीं मानेंगे मोस्टली, तो आप बोलो हफ्ता नहीं तो 3-4 दिन दीजिए। उनसे आप टाइम मांग सकते हैं थोड़ा। कोई भी जन ऐसे इमीडिएटली तो आंसर नहीं करने वाला है। अगर कहीं से अगर आपको ईवाई से भी आता है ऑफर, तो आप इमीडिएटली तो किसी को आंसर नहीं करोगे कि हाँ मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। तो एक लंबा प्रोसेस चलता है उसके बीच में भी। तो प्रोसेस के बीच में अगर आपको कहीं और से ऑफर आ जाता है तो अच्छा है, तो आप वो डिले करने का ट्राई कर सकते हैं अगर मिड साइज तो आपको ऑफर आ रहा है तो मैंने भी यानी जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको वही सजेस्ट किया था, और उसका ऐसे ही हुआ था। उसको एक मिड साइज फर्म पुणे से ऑफर आ गया था, बट उसका ईवाई में इंटरव्यू तक शेड्यूल नहीं हुआ था तब तक। बट उसने थोड़ा उसको डिले करवाया और फिर उसका ईवाई से रिस्पॉन्स आ गया पॉजिटिव, तो उसने ईवाई ज्वाइन किया था फिर। ओके, सो थैंक यू भाई। एंड दूसरा ये भी रहता है कि आपने अगर वो फॉर्म ज्वाइन भी कर लिया बट आर्टिकलशिप के लिए रजिस्टर नहीं किया, तो आप इजीली स्विच कर सकते हो। बट मिड साइज फॉर्म भी फोर्स करती है कि फर्स्ट सेकंड डे पे आपको बोल देती है कि आप रजिस्टर कर लो पहले, क्योंकि उनको भी पता है ऐसे केसेस होते हैं। ओके, फॉलो अप आपको एचआर से ही करना पड़ेगा। जो भी एचआर रहेंगे आपको जिनका कॉल वगैरह आएगा, तो उनसे ही फॉलो अप लेना पड़ेगा। और फॉलो-अप को लेके मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि डोंट मतलब इतना डेस्परेटली होके बार-बार एचआर को रिपीटेडली हम्म, कॉल्स करना भी मतलब गलत इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। एक बार अगर आपको एचआर से फर्स्ट कॉल आता है, देन वेट पेशेंटली फॉर 2 टू 3 डेज़। अगर 3 दिन से ज़्यादा हो रहा है, तो फिर आप एचआर को मेल कर सकते हो एक बार, या अगर मतलब कॉल अगर आपको आ ही नहीं रहा है, तो जो आपने मेल आईडी पे मेल किया है, एक आप वहाँ पे टॉप अप मेल डाल सकते हो रिगार्डिंग फॉलो अप, या फिर आप अगर आपके पास कोई नंबर है तो आप उस पर कॉल कर सकते हो, बट डेस्परेटली बार बार कॉल मत किए करना। एंड आई होप मेनी ऑफ यू आर सेंसिबल, सो आप लोगों को ये सब चीज़ें पता होगी। और अमित जैसे आप बोल रहे हो, सो हायर द पोजिशन ऑफ द पर्सन यू आर मतलब आपकी जो रेफर कर रहे हैं, अगर उनकी पोजीशन जितनी हायर हो उतने आपके चांसेस बढ़ते हैं, ये ट्रू है। बट इट विल अदर देन दैट इट विल टोटली डिपेंड अपॉन योर इंटरव्यू। इवन इफ अगर आपका रेफरल डायरेक्टर का है, बट अगर आप इंटरव्यू में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, देन इट्स जस्ट अ वेस्ट, नथिंग एल्स। तो आई हैव लेट्स गॉट वन एंड मोर द क्वेरी। सेशन। या सागर। Yeah, so like अभी सिर्फ 5 days ही हुए हमारे रिजल्ट अनाउंस हुए हुए, बट आई कैन सी अ लॉट ऑफ पोस्ट रिगार्डिंग आर्टिकलशिप वैकेंसी ऑन लिंक्डइन। सो इट्स क्रिएटिंग अ मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ फोमो इन अस कि अभी अप्लाई करें नहीं करें अभी, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट 2 months हो गया है कि बुक हमने उठाई भी नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा तो लाइक यू ऑल्सो नो कि काफ़ी चीज़ हम भूल जाते हैं, टैक्सेशन हाँ से हाँ रिलेटेड, ऑडिट से रिलेटेड। हाँ। तो डू यू थिंक कि हमें एकदम मतलब एकदम इतना हौच पौच होके अभी से ही अप्लाई कर देना चाहिए, या फिर थोड़ा सा हाँ, पहले 5 to 10 days लेके प्रिपेयर होके देन वी शुड स्टार्ट अप्लाइंग फॉर आर्टिकलशिप? नहीं, अप्लाई अभी से करना चाहिए, क्योंकि वहां से रिस्पॉन्स आने में भी टाइम लगेगा। अगर अभी अप्लाई कर दिया तो ऐसा नहीं है कि अगले दिन कॉल आ जाएगा, तो वो प्रोसेस में टाइम लगता है। तो वो प्रोसेस के बीच में आप अपना जो आपको रिवाइज करना है वो कर लो। बट अगर आपने लेट किया तो फिर इश्यूज आ सकते हैं। वो वैकेंसी क्योंकि फिल होते जाती है, अगर उनके पास कैंडिडेट्स आ रहे हैं एंड उनको कैंडिडेट अगर अच्छा लगा तो वो हायर कर लेंगे, वो वेट नहीं करेंगे दूसरे कैंडिडेट्स का। ऐसा है। तो ओके, और अप्लाई अभी एंड से ही कर लो। व्हाट, हम्म, अच्छा ठीक है, एंड व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर ज्वाइनिंग आर्टिकलशिप इन ऑर्डर टू नॉट डिले और अटेम्प्ट फॉर फाइनल? आवाज कर ली थी, पार्डन। या तो मैं पूछ रहा था कि मतलब हमारी आर्टिकलशिप की लास्ट डेट क्या होती है, मतलब जब तक हमें ज्वाइन कर लेना चाहिए इन ऑर्डर नॉट टू डिले और फाइनल अटेम्प्ट? मैं अटेम्प्ट के लिए 31 अक्टूबर। ओके ओके, थैंक यू। और मैंने खुद ने लास्ट डे पे ज्वाइन किया है, 31 अक्टूबर को ही ज्वाइन किया अच्छा, था यानी।
हाँ, मेरा उस दिन ही हुआ है, यानी मेरा सिलेक्शन बहुत पहले हो गया था, बट कुछ वैकेंसी का इशू था उनका, तो मेरा ज्वाइनिंग 31 अक्टूबर से ही हुआ था। अच्छा, ओके, थैंक यू। एज प्रीति, आप कौन से लोकेशन पे हो? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, Shrishti, you are audible. Ask them for an हेलो, online interview if possible. If you have their contact number, you can contact them. And I think we will end the session now, and all the queries that are remaining, you can ask us personally. Srishti, let's wind up the session. yes, sure. So, thank you everyone for joining this session and so patiently hearing. I hope this session was amazing and it will help you a lot in your articleship hunt. And also, all the best to each one of you for your future endeavors. I hope we'll all meet once again as a article and as a professional in years to come. So, stay connected, everyone. And thank you once again for joining. Thank you, everyone. Thank you.